वालेकुम अस्सलाम। इस पे स्ट्राइक वगैरह तो नहीं होगा? A butcher? I don't. What? I don't know. But different from selling a phone. But Sell me this pencil. I mean, it's pen. not a pencil. It's a pen. Pen. And what that pen can do is it can keep notes and keep track of how all of our teams are doing here currently in PMWI on the All-Star stage, because only 6 teams are going to get through into the main event. So, Jason Kappen, Maxman, 7 Worlds Gaming, and you know what? Before we get to talk about this special topic, which you guys saw on your screen for a split second, Maxman, Dragon Ball Super. We've been hearing about it for a long time now. It's finally coming to Pubgmobile in a sweet collaboration. There is some awesome game modes, items, vehicles, and a lot more for you guys all to explore. So make sure you guys are checking that out, because you sure as hell know all 3 of us, all 7 of us here are going to be doing that. yeah, I never see you as hyped for like collaborations and skins, but this one you're like, oh, when it comes out, I'm going to get the Literally, skins. when it was announced, I messaged you like, Max, did you I see did this? I mean, it looks great. We saw some of the skins already. Sometimes they've been announced, and the set is looking awesome. And the game mode, the Kamiyama, some people say it weirdly enough, even though you don't say that way. I've seen a lot of people say that way. I know you don't say that way, but I'm just saying, don't say that way. That's not how you say it. 7, are you excited? Are you hyped? I am. I'm trying to figure out, while you guys were telling, I'm trying to figure out which character would I want to be, Vegeta or Goku? Oh, Vegeta. Well, I'm more like Gohan when he was a child, though, because I'm short. So. and I'd say, well, okay, let's do this Because then. of height, yeah. So, young Gohan, Krillin. 100% Krillin. You know what? No, Chaozu. You be Chaozu. Oh, yeah. You be Krillin. I wanted Krillin. to be Vegeta, but okay, sure. Who would I be? Who would I be? There's no way you could be Vegeta. What are you talking about? He's got the hairline for it, to be fair. Hey, it's cosplay. Who would I be? I don't know who I'd been. Bulma? Bulma? No. He's cute. Yeah, I'll take Freezer. it. Freezer. How are you supposed to take that? He's a good guy. Which stage? I don't know. It doesn't matter. But everyone, obviously, we've had 3 of our matches finish off here. Vampire taking the last one here on our day so far. Let's take a look at the match rankings. You can see 24 points picked up for them. I mean, they're through. That's it. They're through. There's no way I see them ever having a chance to not qualify for the main event. But also D plus Kia, to be fair. I think they only need 1 really good match today to do so. But S2G, they get themselves 8 points. I'm going to skip over a couple of other teams here, because Alpha 7, Aegon X, I8, these are other 2 teams we're looking at to potentially either maintain, well, Alpha 7 already qualified, but to kind of change the buffer. If Alpha 7 fall out of top 6, then it's like, well, it doesn't matter if you're in 7th place anymore, you're not going to qualify. That's the big one, right? I think a lot of the other teams are hoping that Alpha 7 is within those top 6, because then it's going to move down to the 7th place. And like, remember, at the beginning of the day, FaZe Clan was in that 7th place. With the way they've been playing, I think they have fallen off a little bit, but I'm intrigued to see which other teams are going to be fighting for that 7th spot if Alpha 7 is within the top 6. Yeah, I mean, it's very important for them to be there, because it reduces the threshold to reach top 7 pretty significantly. So having Alpha 7 actually doing well is beneficial for a lot of those teams aiming for those top positions to try and qualify. But we saw so many teams try and do a little bit better here, but I mean, Vampire in particular, I've written too many times on my cue cards, Vampire doing well, and they just, the thing is that sets them apart is down the bottom right. It's true. It's true. It's very French, but it's true. I have the worst handwriting. I don't know anyone in the world of esports that takes notes in cursive, but this man does. I do, but it's good. It's not that bad. And my writing hasn't changed since I was like 12. So it's just arrows. You sure? Since you were maybe 4? Yeah, that could be accurate, actually. Yeah, that's why I keep it this way. It's really bad. But Vampire have been just doing so good, and their map knowledge is
It I is. would say the best in the lobby by far. They sent it without any information on that dip where Peralta got pushed on by Donuts Varel. Yep. Without information, they just knew it was so strong that it was worth fighting for. Yeah, and we saw RA starting to go towards that third party as well, and Vampire just came and destroyed them. But something that we do need to point out about Vampire is that Uzi, he finally got a chance to play, and I think we might end up jinxing it because he ended up being stoned, being sub for Newsy. Did we jinx it, you think? I think we did. Oh, you think? Okay. Then I mean, you jinxed it, not me. yeah, I don't want to be said I'm jinxing anything ever again. Maybe we didn't jinx it. Maybe we called it. Maybe it was gonna happen. no. Maybe Alan Walker went up to Sertan. He was like, you know what? I saw Newsy and TDM. Put this man in. And of course, Sertan is like, yes, sir, I will. Tony K, 1,400 damage. You can see Newsy in there, 281. Not too much, but the limbs will speak for themselves. Tony K redeeming himself from that one match that we discussed that we will not talk about too much. Still to this day, he's redeeming himself for that one game, despite doing so well. Still redemption time. But Newsy, yeah, not going to be taking too much damage and not healing too much, but he was Great definitely start, present. though. Great start for him to be able to come out, not put out a lot of damage, but still being able to get 3 elims. I feel like that's good to see out of him. Yeah, I mean, I think you mentioned it earlier in the green room, right, Seven? They're definitely playing a different approach as to what we saw in day one, where they're playing a lot more edge, which goes back once again in that survival mode we saw from them, which early game, we're going to take the very slow approach. But that one moment, we have the opportunity to go for a game-winning play, which you saw at the end of yesterday. And now in this game, they just full send it and fully commit. Yep. Well, gentlemen, I'm sorry not to cut you off here because we didn't get to see it in the last match, but we're going to see it now because it's do or die time for these teams. It's time to take a look here at our overall standings, get an idea of who is currently going to be qualified through, and the cutoff. Well, it is Aegon X I8 technically in because, again, Alpha 7 are already qualified to the main event. So we're looking for top 7. It's a 1-point difference between 7th, 8th, and 9th combined because they are both at 86 points. That's scary. That's close. For Aegon I, it was that one chicken dinner that we saw early on the Wrangle on game number 2. They don't get that game, they're not in the racing And for 84 that position. for Infinity IQ. So they're only 3 points behind qualifying at the moment. But again, the way tiebreakers work, it's chicken dinners first, placements, then eliminations. So that can come into a massive factor. If Infinity get a win, well, I think they're going to be safe at this rate. But you don't want to have to go down to tiebreakers here. Yeah, you don't want to be able to do that. And one team that I'm looking at right here, Bigatron, I mean, they just keep falling down more and more. And now we see Vampire, I'm going to have to bring it again. We see Vampire now, right, being able to let Newsy play. When are we going to be able to see Ryzen, whatever it might be, whether it's the coach not wanting to let him in? I feel like nothing's working out after day one. Might as well just put in a player that has had experience, right? Maybe he hasn't played at this stage in a very long time, but see what can happen. And it's a player that's going to be hungry. I mean, he came here for a reason, right? So I'm hoping that they put in Ryzen. I mean, they're going in the main tournament 100%, right? So it's good to get him heated before the main tournament on this final day because, as we said, they're pretty much, well, they're 100% in at this point, right? So it's good to get that. Though, talking about Bigatron, you didn't mention them. I feel like their biggest enemy is still indecision. They push from apartment into school, and they're just waiting in this position, which is very nadeable against the side of D+ Kia. I want to see them fully commit to that decision making. If they don't do so, I mean, teams are going to punish those mistakes instantly. Well, Seven, I think when we're watching the matches, we obviously get to watch it with hotJukes and Kalaris, and I think Kalaris was actually saying that he thinks the cutoff is around Bigatron at the moment, where like teams that legitimately have a chance to get into the main event, and they're currently at 74 points. Like, what's the drop off from there on? And also, do you agree with that? I do agree with that. I think Bigatron is the one that could maybe leapfrog everybody and try to get to that 7th spot if Alpha 7 continues to be within the top 6. But I think it's going to be harder. Right now, we're starting to see SGG. We're wondering what was going to happen after Sandhawk. If they were going to be able to continue on those performances. They didn't on the first Erangel, and now they're starting to put those numbers. We're starting to see the pressure of SGG, that champion caliber team that we've been hoping that they're going to show up. I feel like SGG is the one that's currently having the chance to maybe make it to the top 6. Okay, we can hear the music rise. You know what that means at home, and hopefully what it means for all of us here as well in the studio, in the stage as well. We have our 4th match coming up here in just a few seconds. It's going to be our second to last Erangel here of the All-Star stage. That's going to be brought to you by the glorious, the amazing hotJukes and Kalaris. The amazing! Oh my goodness. You know what? Speaking of amazing, what a tournament we have had so far today. And it is getting so
close to the end, and this is going to be one heck of a race here, Kalaris. And if any Erangel was going to test them before we go on to Miramar, this might be the worst plane path I have ever seen on an Erangel. I'm not sure how those northern teams are going to be able to react to it. You need backup drops, and if you want to go for those cars and long rotations, you better hope the circle goes your way, because this is punishing. I mean, what backup drops do you have at this point? I mean, it is so insane. I mean, this is a great drop for, you know, Vampire. They're going to go to Primorsk. We know that for a fact. But the rest of the squads, like you mentioned, they're going to have to hunt down those vehicles and get on the move. So a brutal playing path at such a pivotal point in this tournament. Terrifying, this playing path, and as you can see already, teams have found themselves in the vicinity of one another that not necessarily used to finding. So you see Punching King there looking towards Alpha 7. They need vehicles. They've got one player getting themselves a decent gun for some coverage. Get on out of there and don't get wounded. Mafioso still trying to take off. Oh, T does find the DP. That's the gun you want. Does get a couple shots onto Alpha 7, but it looks like they are going to be able to make it just by the skin of their teeth. So this is one of those teams that likes to drop in that north area. Wouldn't be surprised if we're going to see them head straight to Lipovka, because, man, Alpha 7, they are a late tournament team, and they're finally trying to turn it up here. Yeah, trying to catch them to... It really had to... Might be a little bit on our reach. But at least for these guys, was taking a look at the map, the circle is not as as it could have been here. This is playable for teams even that are moving up towards the north. You can get yourself good entry point onto that position when it comes to like entering towards school, entering towards Yasnaya, even if you're going to go way north. But some of these teams will just realize, okay, maybe we can scrap loot and then get to that circle a little bit quicker than our normal drop spot. 100%. Well, remember, everybody watching, it's top 6 that is going to move on to the main tournament. That is that cutoff. That is the goal. And man, Aegon I8 clutching it up, right, with a huge game, puts them in that running. They're right below Team Falcons. I know the stadium definitely wants Team Falcons to turn it up here, but I mean, they have to really watch their backs. Well, of course, as we have a little move on towards this, these kind of engagements that come down are kind of symptomatic of that flame pattern as it does fall here. But D+ has already started things off nicely. Some entry shots from Choco to get some kind of retribution on that, but it's not going to work out. Yeah, this is going to be against Athon Esports, and they have not had the tournament that they were looking for here. So I'm not surprised if we see D+ Kia really kind of hunt this down and try to get those additional points, because they're sitting in third right now. Yeah. So actually, to go back on what you put your point about the qualification through, of course, Aegon IA are obviously technically through at the moment with that barrier being 7th, because you've got Alpha 7 in that top running who have already qualified. So it's really close, as you're saying. If you're looking 8th, 9th, 10th, 11th, I think these are the teams that are realistically going to have the strikeout, like they mentioned on the desk, to come towards that top position. Because I don't see Alpha 7 falling out of that top 7, personally. Doubt it, especially with them turning it up. But I for sure, you know, they're going to be hunting for at least that 2nd place cutoff, because the prize pool is just absolutely insane here at this stage. But again, so now with Alpha 7, of course, you know, making it into that top 6, it is that 7th place cutoff, but it's so close. Look at that. PA's clan. S2G. 1 point behind. 1 point. Goodness gracious. Super close here. So let's see how it goes, because with only 3 games remaining, it can get down to the wire. Already we're seeing all these teams, especially on the west side, really fan out for that kind of trash drop that I was mentioning before. It just works better for the playing path, so you don't have to spend so much time rotating constantly. Your loot's going to be kind of close to what you were going to be going for, but not exactly. So there'll need to be a little bit of adaptation. Maybe you can take some fights and, like an Uber driver delivery, you know, you get a cheeky crate, all your loot delivered to you. Hey, you know, sometimes it's better to loot crates rather than buildings, you know? So we'll see who's going to be able to do that here. You know, Alpha 7 are going to get one of their secondary drop locations, so they're going to be pretty used to this loot that they're going to get. But like you mentioned, a lot of these squads are scrambling now with this zone right here on the east side of the map. A lot of teams don't want to head over into that north side. They want to just stick right where they're at, and they're going to have to deal with the loot that they can get. Yeah, I mean, the amount of times we've seen circles like this end kind of west of shelter. We've seen it in this tournament as well. These kinds of locations, you'll see a lot of teams try and pitch up central and then fan out from there. So, but it'll take them a little while longer, as they had to go further afield for that loot.
as already Infinity IQ is going to try and solidify themselves on the other side of the bridge, use this as a checkpoint position, and then scout out ahead. So it's a smart move, it's a patient move. Yeah, and I could see them right now. They're not definitely don't have the loot that they're really looking for. You see some of them with some scars. They're definitely looking for that M4. My question is this: do you think that with this particular zone, they have to know that some squads went into military? Do you think that this is a checkpoint they want to hold for just a little bit longer and possibly gatekeep some squads? They could, because for teams on military, when a circle like this kind of slightly includes military, but not too much, you know it's not finishing there, right? It's almost impossibility that it would finish there. So they have to make their transitions. But if I'm military teams coming in for this, there's not too much urgency about making this move super, super fast. So they could stay there for a while, but the longer you stay there and the longer they stay down there, because they still have a little bit of room, the more room you're giving up in the center of a circle like this. So it's kind of a double-edged blade. Yeah, double-edged sword for sure. Yeah. And that's those 50-50 decisions you have to make as an IGL, and it's so tough. I mean, because already with the clock where it's at, so many of the central positions are already taken up. Yeah. And it's so crazy to see how fast these teams are rotating now. As far as squads still outside of this zone, you can see, Infinity IQ are going to hold the bridge for just a little while, see if anybody decides to make the mistake of full sending it down it, which I doubt we will see. But, you know, we still have Vampire barely coming out of Primorsk. I'm really interested to see how they're going to rotate in and at what their strategy is, because at this point they have such a lead. Yeah. Right? Yeah. They could pretty much do whatever they want to a degree, yes. Right? So, I mean, honestly, if they do good in this game, it's like lockdown. Super over. Super lockdown, right? So at that point, if there's a squad in that 7th, 8th place position, they could decide, we don't want to deal with you in the main tournament. That's a possibility. Yeah, and usually you would kind of attack teams that drop near you, which makes it easier for you on early stages, like Erangel, for example, to have more room. You get them more loot, more freedom on your rotations and stuff like that. So if you're teams that drop near Vampire on other battlegrounds, and you're not in that top 7 just yet, or just slightly on the bubble, you might want to be a little bit cautious in the next couple of games. Well, yeah, so I think that this is 100% one of the most important matches in this tournament. You know, especially for those mid-era teams. They want to be able to put up some major points and solidify their spot. Next zone about to pop. We can see the plane path. Uh-oh. What, we dropping? Last time we saw the plane fly like that, Team Falcon's got a chicken. That did happen. I don't know whether it was correlation. I don't know. Could have been a sign. Could have been a sign. But look at this. I mean, obviously you're saying about that bridge camp as well on the west side. We're also waiting for that circle to pop. Infinity IQ does have some M249s in this. They are vehicle destroyers. And they're still in the circle. And it's going to force all of these teams from that military island up. So if Infinity IQ still holds this, they have the armaments capable to cause some major damage. And I think that's what they're going to do. With a zone like this, they don't have to move just yet, and getting those early eliminations could definitely prove to be fruitful. Let's take a look so far. D plus Kia with 2, 7-9 with 1. Rest pretty much everybody is still in this lobby. Here goes S2G on the rotation right near Rozhak. They're going to be coming through that north side, looking for a spot maybe in the shelter area. And it's important for them to be a little bit faster about these things, because I feel like some of the games today, even though you know, they did well on the Sandhog, they've been a little bit slow here and there. But let's see if they can kind of evade the eye lines of FaZe here, as they're kind of rotating right up against them. So we could see some shots from those vehicles very soon. Yeah, they want to play it really carefully. I think that's another big struggle that S2G has been having, is losing these players early on rotation. And yeah, you know, if you're just a little bit too late, they're going to catch you slipping. Let's see what Aegon 8 is all the way in the south here at top of the mountain, maybe looking to get some... Oh, they caught Trick? Okay. How did they find him? And yeah, well, I mean, I guess he's gone. They can see the buggies in the distance as well. If they're able to get a knock on this, that would probably set a new record for the tournament so far. But they see one team ahead of them. Now they see them rotating west. They might think that their main problem is alleviated on their rotation across the bridge, but we still have that 3-1 split from Infinity IQ on the other side. What is Aegon I8 going to do? I can understand that they want to get that elimination point because they are in a they're in some big trouble with this rotation. So they wanted to get that elimination, but now here comes the blue zone. It is coming in hot. I think at this point, with the time they're at, they're going to have to go out that bridge or start swimming. Yeah, probably. As for now, it looks like
Infinity IQ has actually moved away from that little bridge camp that was going on. They had Bensu up at the top here, scouting out if any teams were coming in west of him, and indeed they did, so they kind of moved away from that. You can see Gladiators was one of those teams that was coming in the west side of Milta here, and DRS has got Milta on lockdown by the looks of things. Oh, and real fortunate timing for Aegon I8. They're going to be able to push up through this bridge very safely now that Infinity IQ have ejected and decided to take this eastern side of Milta. Yep, they're going to hold on this compound for now. Wait to see where this next zone's going to go. Meanwhile, Bezexis, our last place team, rotating the hard way through the other bridge. Yeah, it's going to take a little while, expend some of your resources here when it comes to meds, but DRS is already taking shots from Milta towards R8, who is in the compounds just north of it. We're waiting for that circle shift to come on in. Aegon I8, as you can see on the south of that bridge, playing things very slowly, realizing there could be a bridge camp, as we mentioned. That's already moved away, so there is still a path for them to move and transition through, but there are some teams in compounds above them. Oh! And that's quite fortunate for them. Woo! They are screaming for joy right now. If you're Aegon I8, you're so hyped. You don't got to move. You can hold this bridge for a little bit longer and extend your play. Now, teams on the north, Sem9, D plus Kia, right? They are going to have to move through south, and I'll tell you what, all the spots already in this zone are already taken because half this zone is cut in half with water. Yeah, definitely. And Spray's come in here from 6 to try and get something done for Falcons. They want to solidify themselves in this top 7 positions at the moment. And they're going to be surrounded by quite a few teams. And also, they're going to have teams likely coming down from Lumberyard above them. So some of those compounds are really strong to hold on to. But as time goes on, I mean, it's an edge position, so it might lose value. It might lose value indeed, but with the zone cut in half the way it is, I think right now they just got to cut it out and just focus on their backs. All the teams that could be rotating right into them. Meanwhile, S2G in the thick of it inside of Milta, completely surrounded. We might get an urban finish here. We might. Milta is a very big fixture of all of this. And Ray looking for an opportunity. I think he had an MG3 in his hands. But anyway, we've got ourselves just battles going on everywhere. Newsy's down because he's kind of the Vampires is kind of sandwiched in between the Aegon IA as well as Gladiator's situation here. And they don't have that much cover to work with. Rules looks to get a double nade onto S2G. So DRS is actually going to be pushing S2G here in this situation. And one nade could definitely make things really difficult for them. But meanwhile, with all the action happening, here comes Alpha 7 onto iCurd. 2 knocks in hand. Smoke coming out for Carrillo. Looking to buy themselves some time. They want to keep every single player they can up here now. Got to get them up. As you can see, for a lot of these teams in the top half of this board at the moment, they're all in combat, all trying to find themselves and wiggle a way through here. iCurd looking from the distance. They're on the edge here and trying to find a decent battle against Alpha 7. They have a lot of off angles here. They need everybody right in line of sight here against Alpha 7 to try and shut them down and get them out of this lobby. iCurd hurt big time. Only down to 2 players left. Senatexa has his eyes locked on them. This is all the way at the edge of the zone right here. So Alpha 7, by the skin of their teeth, they still have all players up. Yeah. But they're gonna have. But this is where they like to be. They like to be in those edge situations. And iCurd, I think, is bailing on this because Ferrari just hit a big M24 shot on one of their members, which causes even more complication for them. So Aram just going to run over to the Wizard Tower, maybe play things out for a little bit longer, try and play for placement, but there's no way he's getting the rest of his team up. That's Own Esports, first team to go out here in this match number 4. Team Falcons, one of the squads right on the cusp of making it in or getting kicked out. So they are still holding strong here. Next zone about to pop. If it goes in the water, Calaris, no, Milta. Oh, it's going to be a party. I want Milta. Give me Milta. I want to see some urban endings once again. We've got Milta in a lot of this here as all these teams now going to scramble on through. But the same D plus Kia going up against Sen9 here. DBS is ringing out across the battleground and doing a lot of damage, and they will be able to shut them down. D plus Kia got to revive themselves, though. Taking out Sem9 is huge right now. Sem9 were in that 15th place position, but more points for D plus Kia as we're in 3rd place starting to. Let's take a look at this nade that we saw a little bit earlier. That double nade hurt big time. 2 players from S2G out just like that. Yeah, definitely. So now, as all these teams here trying to find themselves a building, anything that they can try and play from, sometimes transitioning through all of these positions is very, very deadly indeed. Thankfully for DRS,
Actually, this 2-2 split that they've got going on, really not that bad. They're controlling quite a bit of space, even though S2G's in the middle of them here, so they can kind of pincer S2G and keep them locked in. Keep a good eye on them. Yeah, and there's no way I don't think they can push them. There's too many teams surrounding them. Agreed. If they go outside, they're just going to get popped. So for right now, DRS has to deal with their neighbors and hope that the zone comes to them. If it does, then it's going to be one heck of a party in Milta. Looking outside, Alpha 7 still outside of the zone. Team Falcon still outside of the zone. And now we're finally seeing D plus Kia come on down from the north. Steady as she goes here for the moment, though, as Agon IA is in a scary situation. They're looking over towards Milta, realizing probably how many teams are in there and thinking to themselves, how do we make this work? In fact, we're already seeing one of them swimming about a little bit. So that's, again, kind of a salvage mission for them, considering the position. It is so difficult for them to try and get into Milta, because if they do, if they even have vehicles, they could try and bomb it in, but then they know 6 teams or so is just going to gun them down. 100%. So Agon I8, again, a team that's right there. There you can see down 7th place position, only 1 point separating them from S2G and FaZe Clan. So they are forced to come in through the south side due to the plane path that we saw a little bit earlier on. And this position's, you got a lot of angles that you could be able to hold there, so they could definitely hold it down for now. But once that zone pops over, and you don't have a vehicle, it's going to be tough. I feel like they needed to use the chaos of all the teams moving whilst this was going to be the case, because Alpha 7 is going for that big transition along the beach side here to try and move on across. You can see Agon IA realizing that people are just trying to leapfrog ahead of them a little bit here. And they do see them in the distance, but shots will come in. This is the problem. If you're trying to make this work, it is so brutal to do. Alpha 7 moving in a lot earlier than I think they normally see them, but they try to get that center position. They're going to lose most likely 2 players here in this spot. Yeah, Carrillo is completely stuck. So it's going to be just 2 members of Alpha 7. Meanwhile, DRS have this spot on lockdown. An absolute rat race if you're going to try and make this work. It's not possible to try and somehow barrel into the Milta when there's this many teams looking at you. So for DRS, shutting down a lot of this. For these teams on the edges as well. I mean, Gladiators, for example, as well, it makes it even harder for some of those teams north to try and find a spot, because it's all fields above them. As you see, iCurd is gone. There was an MG3 out there on that box, but I don't think they'll go get it. Well, I'll tell you what, one thing that we got to talk about too, DRS now eliminated 2 players from Alpha 7, right? That is the team that's in 4th place, right? Just a couple spots below them. Yeah. I think they may want to prioritize making sure they get them out as early as possible. Even though they have a little bit of lead, you do not want Alpha 7 to get on fire. And this zone shift, we were hoping for a Milta finish, but it had to go in the fields. And this is going to be rough, really rough for so many of those teams in the east side. Which is slow with the blue on your back. But then you're going to have to somehow find a spot in all of this here. As Agonai is now going to push up against Vampire. But that this game was a a bad move, poegana. considering with the offensive smokes that they've used as well, they have blocked out their lines of sight. Beautiful shotgun right there from Isabian na poega sa kisam game ka vida. To help slow this down as well. Here comes Balak trying to throw some util, trying to get a nade of their own. Schweppes is going to be able to come in through this side. I'm surprised the rest of his team isn't there. Schweppes is dominating Agon I8. That's 2. Will he be able to get knocked? No, he will actually get knocked by Tixie from across the road here. But can this be done anymore? There is 1 member left. Tony K up on that roof to be able to deal with it. But look at this. Guardians is laying in. Wait, that's what a corker! Catching Tony K. Vampires is down. Huge nade there for Agon I8. The points that they absolutely needed. And I'm surprised with that nade, it's going to help give them some time, because if this fight went any longer, you know Gladiators were coming. Definitely. That was over as quick as it was starting. But then we go. That's Gladiators here holding a position north of it, which is so super powerful. I mean, you're going to see Meku probably eventually flex into some of the buildings north of them as well, unless they're very... mobile player होते हो Isabian na poega जैसे Isab दे. How can they do? उल्टा live stream दे. Here, looking to get some nades going. Team Falcons applying that pressure. This is going to be a massive push. 1 minute 34 on the clock to have a little bit of breathing room here. But that initial knock with that nade is going to be so crucial. TQ heading up the front lines. 1 knock's already on them. Jonas Farrell going to have to hold it down here. Nice little bank shot with that nade. TQ completely stuck because of that Molotov. And this is just a back and forth utility usage, just slowly picking away at Jonas Farrell.
Nice little peek around, but Naoto will actually go down as well from the reinforcing shots coming on in from Punching King. At the same time, though, I mean, all those smokes that were thrown outside offensively and defensively just caused a little bit of chaos down here, a little bit of uncertainty about how those nades were going to, as you say, bank off those windowsills, etc. And now Punching King is coming around here in brute force, got himself 3 eliminations so far. 6 gets the DBS on action, and that is Donuts down here in 14th. Beautifully done there from Team Falcons, right when they needed it too. They need these points. Take a look at this replay here, this battle between Aegon I8 and Vampire Esports. That nade on the Tony K was just, oh, perfect. The bank was open. And I'll tell you what, them putting up a goose egg, Vampire putting up a goose egg here is huge for DRS Gaming. If they get a big game, we could have a battle for first place. Could. If they're able to kind of chain a few together, it would be quite the feat for them to wrestle away #1 from Vampire, from that Empire. Oof. Very scary. Well, you know what? A team that we saw pretty scary in day #1 was Bigatron. They had such a strong finish, but we've been waiting to hear from them now. Oh, a knock back and forth is going to make things that much more difficult for Bigatron. Yuhai is going to have to make a play here. Trying for it. 6 has already positioned himself. Goes for it. No, but it's not going to be enough at all. Vampire. Actually, we could even hear the crowd there go wild for that one. Taking out Bigatron. Team Falcons pushing the envelope right when they need to. Oh, a double nade in synchrony. Nice. Look at that. Does it hit? Oh, both of them just barely missing the mark. I mean, if they're in that smoke at that point, because they're aiming for exactly there, then that is a perfect play. But, of course, they were a bit more... Falcons was a bit more aware than just sitting in that smoke. Sit in the warehouse for the moment. You're not in the blue up until this point, of course, and try and get them out. 8 eliminations is so key for them because getting into this next zone is going to be almost impossible. Once they open up that hill, once they go over that hill, it's going to be a wide open range. They're going to go through the blue zone. A lot of people looking right at them, and just like I mentioned, we just saw them take it out. You're totally right. I mean, if you would look at the map in general, everyone's playing edge because at the center of this circle, there's nothing there. There's a few hay bales. You need your cars to try and make that work. And, well, this is a Hail Mary. Drive, TQ, trying to survive, looking to get into a dip. And I might be able to do it, so he survives for just a little second longer. But you got to know those shots are coming. Oh, a big battle, though. Here we go. Yangon Galacticos against R8 Esports. Ragnarok's on fire. And with only 1 HP, goes down. The end of the world burns away. It is difficult for Ragnarok to do much about that, but they're going to be eliminated. Meanwhile, Infinity IQ still alive, still present here, trying to get things done against S2G. Kalsi actually was able to finish huge, though. And now, Gladiators is the one that's going to be pressured here down towards the south by Agon IA, trying to make things work. And here they go. They're on the outside. Here comes the pressure. Nades coming on in. It's a battle inside of the smokes, the battle of the DBSs. Who's going to be able to hit those shots? McHugh with the UMP hitting those hardcore pre-fires. He's got to be able to clutch it up for his squad. Goes, gets those thirsts, gets those points. But the shots, he take them down. Aegon I8 isn't done yet. Oh, but that actually is going to be their ticket punch. DRS trying to move across here with some DBSs as well as umps in effect, trying to do something wherever they can. The Saiga, though, able to do something for Mela, but no, he will get knocked as well. Trade at the moment on the stairs, trying to finish that off quickly here to just bag some of those elimination points as quickly as possible. Trying to spray through onto the smoke just in case there's a pre-fire as they're looking to loop on around here. But FaZe is crumbling against this, and they're going to fall. That is a brutal loss for FaZe Clan right there. They are just on that cusp of trying to make it in to qualify for the main tournament. Going out there is rough, but DRS, they know what's at stake. They know they need a 20-plus game here if they want to challenge for that first place title and those beautiful 6-digit prizes. I mean, for those 4 teams still alive in that top 6, they're just trying to solidify themselves there in those positions to try and qualify on through. Matic now, maybe looking for a little bit of time here and there. Rules tries to make the cross. DRS already did a good job at pushing on FaZe and being able to make that work, but pushing into these fields, unfortunately, it is very, very difficult. 100%. Yeah, there's very little cover here. Yeah, you see some hay bales, but that's not going to be enough. And DRS Gaming gonna go out to pop up blue. So we're able to secure nice 10-point finish. It's not going to be enough to catch up to Vampires, but it's definitely going to create that separation from these other squads. But looking down, what was that? A commitment to sacrifice 3 there as DRS. They understand the severity of the situation. I mean, considering that the teams that are still in are also trying to scrap for those top spots, they don't want to give them any.
TQ with the YOLO push all the way to the spot. Might be able to secure another point, but then finally gets caught. So Young on Galacticos are going to be able to hold it down for a little bit longer. McHugh, wow, with some crazy shots on top of this roof. He's got a lot of vision of this land. Yeah, definitely here. Gladiators, for them, they feel like this is their game to win. They've got themselves that strong southern position. They have roofs to play for a little while. All the other teams have to move before them into the firing range of Gladiators, who are 3 on a roof. They know that their back is totally fine here. It's bold, but it works here for the situation. And that's what you want, too, because if one of them gets knocked, they could easily get picked up, and they can continue that pressure, because this is all open field. They know they have the best spot in this circle. Next zone, if it goes down to Gladiators, it is 1,000% their game. But let's see where it's going to go. Matic driving around, catches an off angle, and now knowing where the rest of the teams are, yeah, I'm absolutely happy to see Gladiators push the envelope. They want to use the blue zone to their advantage. You've got to take the initiative here as them, because when you've got a ridge line like this that D plus Kia is actually working with, Matic sends forward, scouts that out, realizes opponents have been moving up there here. There's not a huge sense of urgency for Galacticos to move from the little dip that they found there. So you want to make sure that D plus Kia isn't taking complete control of this ridge line, because that would put you in a bad spot as Gladiators. Huge fight here. Can't stress it enough. Gladiators, prior to this match, they were in 5th place. D plus Kia were in 3rd. Looking to put some major points on the board. Remember, as it goes through the prize pool here, almost every placement in that top 6 goes an extra $10,000 in the bank. You want to get every single placement that you can get. D plus Kia, Forrest going to try to open it up with a nade here. If he catches it, that's going to help him out big time, as the zone does make things that much more difficult for Young and Galacticos. They are in big trouble. How many nades do they expend, though, on dislodging Galacticos here? Because they may end up needing them against Gladiators down the line. That's the big question. Fabian still has 3 available. He was looking that way, looking to boost up. Not too much on Forrest. A few smokes, 1 nade, 1 flash. Forrest just full lay down right now with his eyes on the back of the zone, and I cannot blame him at all. They want to secure that position first, get those points, and then deal with Gladiators right afterwards. Okay, we're going to see Gladiators make a rotation to the other side, or at least one player, so they're working a 3-1 split. And the circle confirms that there is a timer on people's heads, because that circle is flat. There is nothing to work with. Smokes are already going down. Everyone understands the severity of the situation here. Galacticos is going to move up, separate themselves a little bit. So even if nades come in, they won't both get knocked at the same time, but they are now very much in proper nade range. And that's Docile actually getting himself one to start things off. Catching Burnout Boy is so huge there. Only 1 player left up for Young on Galacticos. Here comes the nades in return from Romeo Boy. But it's not going to be enough here. He needed the rest of his team. Meanwhile, Gladiators are hearing this fight, and now here comes their utility. Yeah, good spray down by Satan to start things off against Meku. Tixie's going to try and reinforce this on that left-hand side, but realizes that maybe going that too far would leave him exposed. So going for that pick-up, but it's huge as D plus Kia is able to get the connection. Gladiators are going to scramble to try and get things going. Massive nade there from D plus Kia. The game is now on their side. They know it. Here they come in hot. Here come the DBSs if they got him. Full fresh suppression. Satan up front. Jump shot. Gets clapped by Matic. And now Forrest goes down. No way. Gladiators are not going down without a fight. Way. The run over from Kitsune. Oh my God. That is the game. How did they do that? They almost have faces of disbelief themselves. Look at them. And the South Koreans are absolutely devastated by that one. Honestly, I thought they had that in the bag, Hot Jukes. But look at what Gladiators was able to do in those final moments. I could hear Kitsune right now. I could hear Kitsune's voice saying, "We weren't even worried. We weren't even worried for a second. We had this from the bag. Easy game. No sweat." What an unbelievable turn of a yeah, there it is, right there. Just say, "Hey, what'd I tell you? What did I tell you?" I was about to praise the patience, once again, of D plus Kia. I was about to praise how they were using their utility, saving it for what is most important, but somehow, some way,
yourself, okay, we should have this in the back. This should be ours. But what did we just win? Exactly, and not to mention, for D plus Kia, it's a dagger in the heart for them. Because they only had a 6-point differential between them and the Gladiators. So timing for Aegon I8, they're going to be able to push up through this. मैं अपडेट राशि वल राशि I'm off camera. But no, honestly, Gladiators, like we've been hard on them, to be honest, and they've had a really bad day. Well, for a reason too, because they have definitely slowed down in a big way, especially after day one, even yesterday too. We saw what they were going to be able to do in Sandhawk with the circle favoring them, and then after that it just became pretty much a pure decline from what we were being able to see out of them. We know what this team can bring to the table. We've seen in so many of the events, and like in PMGCs, we saw it back in their home region of now Europe, in the championships too. And the fact is that they've been a little bit disappointing in recent times, but this compound they were holding when I think there were 7, 8 teams fighting in Milta. We didn't even start talking about Milta. All the teams were just trying to survive, or as long as they possibly could. The fact they could play that compound surrounded by fields on the rooftop, Vampire, Aegon I8 were not able to cause any issues for them in the southern edge. And then when they have to focus their attention on D+, well, the buggy did the rest. You mentioned it perfect. The proactiveness of making sure that nobody came near them. And if they were able to their party a fight, they were able to just do that. The aggressivity. 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 You know what? That Aggressivity. The play that was so nice that we're going to watch it twice. Let's go ahead and take a look here. Actually, at the final moments of that last match, and start to break it down a little bit. Again, the nade opened things up. You can see D+ Kia pushing through the smoke as well. But the thing is, when you push their smoke, they're going to see you pretty much first, and they meet the hands of a shotgun to the face. The nice DBS. Yeah, DBS, I mean, really well played, but that's the thing. It took so much of the attention. Like, you just see, what is going on? Picks up 1, picks up 2, just closes up. It's great, honestly. Like, it's fantastic to see final matches like that. And we talk about Sparks. Like, obviously, D+ has been playing well, but like Gladiators, finally, the pressure off of getting a victory. We know they're slow starters. They get the dub. They get themselves pretty secure now going through into the main event, but that's a good start. The thing too is for D+ Kia, like that could have been the extra points that they needed, right, to get them closer to DRS and push them for that second place. Because even though you are going to be qualified to be making it to the main event, what about the money at the end of the day? Like, you want to be able to be in that second place. Yeah, nobody's going to be able to catch Vampire, so gotta go for the next best thing. You're at the point where now teams in the top 7, if they get themselves these big games, it pretty much secures their position in the main tournament. And now there's not a lot of slots remaining where you can make it up, so there's very little space for improvement. I mean, let alone get into the main event. Like, the standings are still so close that you could, like, make another $30,000, $40,000, $50,000 if you just get a victory under your belt. Let's take a look at the match rankings, right? We're talking a lot about Gladiators, a lot about D+ Kia, but how many points did they get in this last match? 22 and 18 respectively.
So a good job by them to help close the gap again. DRS, they still get 10, right? So the gap's going to be closed a little bit by D+, not as much as they were hoping for. But Falcons another 11. Mizex is even getting on the board here with 4. And Yangon Galacticos, we haven't talked about them too much. They were down, I believe, 16th place, you said at the start of the day? They were low. Yeah, 10 points isn't going to be There's enough. a reason why. I do like their approach of the game. They saw that mess happening in Milta. They're like, okay, which most teams probably want to avoid is they want to avoid whatever mess was happening inside Milta, so they just rotate north. They crash onto RA Esport, I believe, at one point, which actually was a really strong push from them. I think the most aggressive we've ever seen Yangon Galacticos actually be at that moment. And then D+ Kia and GG took too much control, so it was hard for them to negate that control and the space those two had. But yeah, the best performance from them. But is it maybe too late? I still think so. Oh, yeah. I definitely think so, too. What You I didn't want to see... hesitate. Oh, yeah, it's true. Yeah, for sure. What I want to see is we were kind of talking about this too while we were watching that match. Is it too late for S2G if they're not being able to be consistent? And at this point, have they done enough to even... Do we want to see them at the main event? Currently, with the results, it's tough. I There's don't a know. group of people next to us that might beat you up for saying that, or even asking that question. We're just being honest here. I mean, at this point, I don't feel like they deserve to be at the main event, especially out of the defending champion. And the reason why we're saying that too, and we're talking about this, Max, we're saying when you expect the PMGC champion, you think of Nova, right? They were able to just dominate everything after they won the first PMGC, then go back the second year and win it, and then going even into the third year, they were the favorite ones to win it too. I just don't get that feeling out of SCG. It's night and day, very clearly. I do not know what's been happening yet. I will say one thing to your point is that you look at Nova and like PELs and they're not like winning all the time. They get into PMGC and they win there, right? A little bit of a different beast, but I do agree with the sentiment that, I mean, this is similar to a PMGC finals, right? You have 3 days of matches. You got to be able to perform here. Maybe we can take actually a look here as we bounce back to Gladiators at their stats in the last match, because we've been very harsh on, well, not very harsh, we've been harsh. Trust me, you haven't seen me very harsh on Kitsune. I'm curious about how the stats go across the board here, as we do see him actually, he's got the lowest damage, but he had the biggest play. Yeah, the biggest play, of course, with the buggy at the end. But Tixie's been a little bit present, and especially, we didn't talk too much about Meku. He was gathering so much information from those rooftops here, Seven. He was gathering info on Aegon I8 and, of course, Vampire in the south, and also gathering early info before going for the game-winning play onto D+ Kia, onto Yangon Galacticos also. So he was very pivotal for the success of this team in this match. And yeah, the moment that the circle shifted away from Milta, their one compound, the stocks risen instantly pretty much because it was so valuable at the time. Yeah, the way they were able to pace, and you said it perfect too, the way they were able to just gather a lot of information when they were on top of the roof, being able to their party fights as well. Overall, they did exactly what they needed to do to get that chicken there. Yeah, it's so valuable when you can play roof and you can have that extra elevation, and when no other teams have the chance of doing that, you just got free info while all the teams are just scrambling trying to get a game plan together with limited information. One thing though, I do feel like if it would have been for that buggy, they would have ended up losing. Yeah, I mean, we all saw the name. It was getting close. We all saw the name popped up. I was like, okay, it's over. D+ Kia is gonna win, and all of a sudden the buggy just came out of nowhere. Though, to be honest, we talked a lot about Gladiators. We didn't talk too much about D+ Kia, right? And D+ Kia, the way that they were able to avoid also all the fights happening in Milta, playing the more northern edge, just constantly shifting on the edge of the circle every single time a circle came in, and also especially holding on to that utility. That opening nade from Sadon was absolutely massive. If they don't get that nade, I think Gladiators win it even easier than if they didn't have the buggy play. But yeah, the D+ Kia pretty much always have a few utility remaining. Buggy play. I don't know, man. Is strong. You think about it, right? Because they got the confirm on one and they got the knock onto another with the nade, then they decided to push through the smoke because they're like, okay, we got like, was it 3 players left alive against Gladiators 2? And maybe because of that, they got extra aggressive. They got to a false sense of security, and that might have cost them the loss. They had to push. The blue zone was right behind them. They literally had no chance. And if they delay it any further, the smoke start to dissipate. And I think Yangon Galacticos have an angle on the eastern edge, so you have to go for the push. I think that of course gives them a little bit of a confidence boost. But even without, they have to commit to the play. You can see D+ Kia still wasn't expecting that. Especially when you have a smoke and you have a buggy coming in. You're like, how do you react? You can't. You can't do anything. Yeah, well, we're actually going to see D+ in the stats here across the board for the team here in this last match. And Sadon, like the opening nade out of him, phenomenal. But unfortunately, it wasn't going to be enough in the end. The nade was good enough to stop the 2 players of G Gladiators, but it wasn't enough to stop the buggy out of Kitsune. As you can see, 5 eliminations coming in for him. You know, Forrest and Fabian, I mean, D+ have been a little bit quiet. Usually Forrest and Fabian were the ones to really kind of
push forward? What's up, son? But something that I am seeing, though, it's not just Force and Fabian, right? It's good to see Satan being able to step up, and something that we always say is not just going to be either one player, two players. It needs to be everybody in the team being able to put up the numbers when they need to be, and that's a perfect example right there that this team, D+Gia, whenever we do make it to the main event, they could have a chance at winning everything. Yeah, and not only him, actually, Osal is kind of playing the role of Ravenclaw for Vampire Esport, where he's the mostly scouting, gathering info, and getting off angle for his team. So sure, the stats might not be as ever present for him, but Osal is also doing a really big part of the work for the team. Okay, what about their two stats against each other? I'm actually curious because we saw the healing was extremely low to both teams. We saw the eliminations, I think favor, if I'm not mistaken, D+ there. But when it goes in the head-to-head and damage, I don't know. Who are you favoring? Give it to me, Max. Prediction. If you get this right, you don't have to do the eyebrow cut. Oh, wait. So re-say again, because I think I missed a part of that. Wait. Nope. Oh, okay. Oh, you're getting the cut. Forrest. You know what? I'll take it. Let's see actually a head-to-head here between those two teams and see if Forrest was the correct answer. It is. It was. It is. All right, so only 7 has to get a cut now. Wait, hold up a second. Forrest. Oh, it doesn't work like that? No. You should have said Alpha 7. That's the equivalent for you, yeah. I mean, pretty close, of course, but mostly what was happening for D+Gia here is that they had some nice high ground elevation north. They were mostly checking teams like Young on Galacticos, RA Esport, and the teams trying to escape outside of Milta. Yeah. So they were able to get a lot of eliminations a bit early in the game, while you're looking at Gladiators, they just picked up all the elims at the end when they were trying to go for that game-winning play. Yeah. Yep. Okay. Well, we do obviously have a little bit of a turn happen here in our matches, right? That was our last angle of the day. Going over to double Miramar here, and this is where things get a little bit interesting. And Max, going into this, I want to remind the viewers at home, which teams are you really looking forward to seeing here on Miramar? And which teams have that little bit of an extra power level on this battleground? Aegon I8 is the one I'm still looking at. They got himself that big win that pushed him in a race to potentially reach that position. And looking back in Pakistan, it was their standout map. And UZM has been doing better. Okay. Weirdly enough, Ghost is still subbed out, which I find a little bit surprising, Seven. Yeah. So I'd like to see him being a little bit more present. I think he played 3 matches yesterday. Not super successful. Maybe can give it another shot today. But I need to see Aegon I8 do well here because this is the map that they are renowned for. For me, it's going to be D+Gia, actually, with the way that we're able to finish here off Erangel. And it's a team that it's been able to perform fairly well when we talk about Miramar. I think they're going to be able to kind of make that push for 2nd place. Yeah, I think there's a chance here. I mean, I think they're already secured, but just for extra prize money, right? So that could be the objective here. Look at this guy, like an extra $15,000, $25,000. It's not a big deal to him. He's like, extra prize money. And there's a lot of pride, actually, if I'm not mistaken, for like D+Gia, because if I'm not mistaken, like South Korea hasn't really been in a position to put up really big placements when we get to these international events. And this could be one of the first ones they're able to do so and really make a name for themselves in their region. I mean, they're always able to qualify for these events. I mean, as we said, when we see teams from Japan and South Korea that always qualify, it's always the same players, the same teams, the same orgs. But yeah, when it comes to actually ranking high on those positions, it doesn't happen too often. So I feel like this is definitely by far, I would say, the strongest South Korea has ever looked in an international event of this caliber, and it's been looking really strong here. Really quickly, this is actually the stats here from अस्सलामुअलैकुम माफिया भाई कैसे हो अस्सलाम वालेकुम रफीक भाई की हाल है मजे है आप वो एक सुनाओ मिनट कैसे हो मज भाई आप आ रहे हो कि नहीं मैंने हैंड फ्री नहीं लगाया है ऐसे ही पूछ रहा हूँ वंस अगेन पूछूंगा पूरे सस्पेंशन के साथ नंबर 1 में ही देना है यार
लिया चुक लिया अस्सलाम वालेकुम रफीक भाई, की वालेकुम हाल अस्सलाम है? माफिया भाई, मजे। आप सुनाओ कैसे हो? इसमें अल्हम्दुलिल्लाह आउटो अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉल रफीक भाई। वगैरह आया है क्या? आया है भाई, हमें तो मालूम भी नहीं। मेरे को भी नहीं मालूम रफीक भाई। इस पे चलते ये क्या है? पहला गेम है। हाँ, ये मेन है मेरे ख्याल से ड्रैगन बॉल विलेज। मेरे ख्याल से रिकॉल वही मिलेगा। रफीक भाई पता नहीं की मैपिंग माड़ा चले नहीं ये चले। किया है, वो तो चलते है भाई। भाई मालूम नहीं होता ये क्या चल रहा है भाई, ये नंबर गेम वन का। भाई और नोक पड़ा है बाहर। रफीक भाई बंदा इस तरफ पूरा इस तरफ इस तरफ वैश्यम वाली तो लैगिंग आ रही है रफीक भाई। भाई लैगिंग नहीं, मालूम नहीं हो रहा है चल क्या रहा है। अच्छा हुआ आप रिकॉल है। हाँ हाँ अभी यार देखेंगे। ये क्या मजाक है भाई नहीं मालूम हो रहा है ऐसा इतना तो फजूल मुझे नीचे से जैसा। मार दिया बंदे ने कैंपस है मैं लैंडिंग किधर था और मैं किधर उतर गया। हाँ वो ग्लिच है वो ग्लिच है वो ग्लिच है ये देखो वो अभी ऐसे ही भी। है। वो अभी 2 मैं 3 मीटर पीछे है गर- हाँ वो ग्लिच है मैं तो बता नहीं सकता हूँ जो हाल है इवेंट में। वापस उधर ही जाएगा मारने मुझे 5 स्टार बॉल मिला। अ, वही गेम के लोड लगे माड़ा। ये अपडेट है कुछ रही है क्या है ये ड्रैगन कैसे यूज यार करें? ये ग्लिच ये ना है खत्म नहीं होना ये सेव किया है। पता नहीं ब्लू कलर का मुझे एक चीज मिला है। उसी के साथ में टट्टी धोने वाला चीज भी मिला है। पानी पानी भी मिला है रफीक भाई मेरे को, और आग भी मिला हुआ है। चलो भाई लास्ट टाइम मेरे पास शूट हो रहा नो पर ये चेक करें। जीरो समन ये क्या है यूज कर रहा जीरो समन ये क्या नहीं आता है नंबर 3 के साथ क्या हुआ है बेचारे को। Marked a location. एक ये बार देखो भी माड़ा। ओए न्यू व्हीकल मैं सामने उसको चलाने की कोशिश करता हूँ मैं कोई नया गाड़ी भी आ गया है। हाँ कुछ वो तो मैंने उड़ने वाली देखा था। गाड़ी है कोई ये 2 to 7 ड्रैगन बॉल्स अप Yes! टेंड। अच्छा क्या कैंपिंग करके मारा बिल्कुल प्रो से आता हूँ आप लोगों के ओ बल्ला भाई मेरा रफीक भाई। ओए 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 क्या अच्छा, मजे की है मैंने I व्हीकल got supplies. यार क्या व्हीकल है ये पूरे कसम से आज ये 4x मैं है मेरे लेके आ पास रहा भाई। हूँ मार्क नहीं किसके हो पास है क्या लेकर आओ इधर, वो लेकर इतनी आओ भाई। फास्ट है इतनी फास्ट होती है एकदम से तो बहुत इतनी फास्ट हो जाती है भाई बेस्ट व्हीकल एवर अभी तक की सबसे बेस्ट व्हीकल है यार ये कितनी हाँ मैं cool है दाली आई एम फाइन। व्हाट्स अबाउट यू ब्रो? अब कैसे ये हो? देखो मुझे तो बोरी मिली भाई, ये देखो बोरी। बोरी। हाल है
चेक करो चेक करो। अगर हम वो दबाएंगे तो हम तेज भागेंगे। हाँ वो साइड वाला वो गोकू वाला टाइप दबाएंगे। इधर में ले आया हूँ व्हीकल। इधर पीछे किसी ने देखनी नहीं है। हेलो जी भाई लेकर आओ, टमाटो भाई लेकर ले आओ आया हूँ। माफी। ये देखो बैठो, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। क्या 1900 अंधेर नगरी गए हो भाई साहब, क्या पिकअप है अभी भी 3 सवारी है, बैठो नंबर पिकअप 1 भाई। चेक करो। रश करते हैं बहुत फास्ट। 3 सवारी है, पिकअप चेक करो। बोलो इसमें डैमेज कितना डैमेज क्यों हो रहा है? रोड से एक जाते हैं, सेकंड रोड में से सही ऊपर रहेगा। ये किधर से मिलता है ये कुसरा? मैं पे हेल्थ भी नहीं। ये वहां से इवेंट के पास से मिलता है, मिलती है। अभी मुझे हेल्थ किट कोई अगर दे दे तो ताकि मैं अपने आप को हील कर लूं। तो हमारा देखिए, रिकॉल ये नहीं बड़ी है, मतलब गेम नहीं खराब करो। ये पानी के में भी चलती है। हाँ याद वो है। बेहतरीन पानी में भी चल रहा। ये तो टीरेक्स है। यार कितना मजे की है कसम से, इतना मजा आ रहा है इसके साथ। मुझे हेल्थ अब कोई और चला ले। मुझे हेल्थ मैं लूट कर रहा हूँ, रुको एक सेकंड लूट कर लो। यहाँ पर कुछ भी नहीं है मेरे पास। आ रहे हैं हम लोग भी आप मस्ती लूट करें। करो। हाँ और अगर हम यहाँ पे जो 7 वाला जो हाँ नहीं रफीक है, भाई। अगर हम इसे दबाए ना 7, जो ये 7 की कुछ चीज है गोकू का जो है, अगर उसे दबाए तो हम फास्ट भागना शुरू कर देंगे, फुल फास्ट। गाड़ी ना छोड़ो। और जब आपने स्टॉप Help! ये देखो इधर बैठा है ये बेगैरत वो इधर। मरा कैंपर। कैंपर लौड़ा इंसान है ये माफी आराम से। रुको मैं आया। पीछे से भी पड़ रही है रफीक भाई। मैं आ रहा हूँ। कुछ उम्मक या हैवान, कुछ उम्मक या हैवान। बोट कैंपर बुलशिट इंसान दिमाग खराब कर रहा है बेगैरत। मुझे उसका डर लग रहा था। चलें अबे यार चलें। इतने बेगैरत इंसान तो मैंने देखा नहीं था। इतना अच्छे अच्छे कपड़े पहने बेगैरत ने। अबे यार 2 बंदे थे, वो चक कर चीजें। लौड़े पे बैठाओ आपको भाई, इधर कर रहे हो बेगैरत इंसान। यू हैव स्टील, इमोट मार रहा है उधर यू हैव से स्टील। इमोट मार रहा है। वो बोल रहा है मुझे कि अभी आपके साथ फिर भी आइए। चांस है। किस चीज का चांस? कैसा चांस है भाई? ऑटो रिकॉल कब हो रहा है, लेकिन हमारे पास खत्म हो गया। नो नो भाई कहीं है, कुछ तो है मैं एग्जिट आ गया। नहीं था रफीक भाई। भाई। है कुछ तो है, कुछ तो नजर। ये देखो, यू स्टिल हैव अ चांस टू रिटर्न टू द मैच और लिव एनीवे। एक तो माफिया भाई बंदा आपके मुंह पे होते हैं भाई, आप फिर कुछ कर नहीं सकते भाई। कौन सा अचीवमेंट पूरा हो गया? यूजर टेम हमेला वन टाइम विश वो जो कंट्री। आप पे नई वाली गाड़ी नहीं है ये, वो आपने चलाई है ना?
ये क्या सीन हुआ रफीक भाई, पता चला वो क्या कह रहा था? लाइव है, रिकॉल है। हाँ है भाई, मगर वो नहीं क्यों रफीक भाई, कैसे है ये नहीं मालूम हो रहा था। चेक करते हैं। سنيدة ابويا شو تنصحني الحين احط شو؟ شو تحط؟ ردها سلسة 90 فريم. والله يا اخي محمد يقول لي احسن اتش دي ار. I got 5 eliminations just now. ده صدقة بس انت كنت تلعب HDR شو 60 فريم؟ ايش دراني انا ما اعرف يا رجال، امس حطيتها. ايه 60 فريم تراك كنت تلعب مثلنا. شو خلاص واحد شو حطيتها؟ انا بعدني HDR. Where to go مارك؟ عندي 30 انا حط. اوكي ابو سنيدة كم؟ انا 30 عندي ليش؟ خيبة. ये वाला चेक करते हैं, इसका नाम क्या है? اتش دي ار وعندي 30 بعدها ليش؟ ما ادري والله. ردها 90 ردها سلسة 90. يا اخي مو بشيء 93 يا اخي، دمج وهمي. मुझे रफीक भाई एक बार रिस्टार्ट करके आना पड़ेगा लग रहा है। भाई रिस्टार्ट की बात नहीं, लवड़े लगे हर जगह। I need a weapon. ايه بفرماتي. अच्छा देखे ना एक enemy हर तरफ है। हाँ वेट नंबर 4। हाँ वेट नंबर 4 वेट. الدنيا ردية ما هذا يبان يسوي له بيت. الدنيا ردية ما هذا يبان يسوي له بيت. ابويا المود اللي الدنيا رد. المود اللي عندكم ترى ما فيه شو اسمه بطاقة. والله عدم المود. ये वाला सीख दो रफीक भाई, एक बंदे के लूट के लिए बस। سلاح راسي عورني انا ما اشوف. बनना पे आओ भाई आओ। انا ما اشوف راسي. Help! انا مارو ملعب كالسمة لعبة 30 فريم، انا عندي اف بي اس معلقة. Help! माइक बंद करो मड़ा इनका। كس. मैंने इनका माइक स्टार्ट I told you wait bro, for one kill you are running. बंदा आगे। रफीक भाई उधर पे शॉप वाले घर पे। नहीं ऊपर हूँ। वो यार ठीक है 0 HP है। Don't give up. बहुत गंदा Your कैंपर है teammates यार can ये still रफीक भाई, recall you. बहुत गंदा। कोई कैंपर नहीं, मैंने बोला भी भाई माफिया के इधर है बंदा, मगर आपको मैं नहीं समझा सकता। वही से फजूल दोनों गंग लवड़े पे चढ़ गए भाई। वो हमें रिकॉल का भी नहीं मिलेगा। ग्लेशियर भाई मस्त भाई आ रहा है और नासिर आ रहा है भाई, क्या करें। अगर नासिर आया फिर जाना पड़ेगा, क्योंकि वो भाई पहले से मैसेज किए थे भाई उन्होंने पहले से, रास्ते में है। अच्छा हाँ वॉइस मैसेज में भेज सकता हूँ, ये नहीं कि आप रफीक भाई, बोलेंगे रफीक भाई, कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। हाँ ठीक है रेडी करो माफिया। रफीक भाई नहीं ठीक है। जस्ट
रफीक भाई 2 मिनट मैं रीस्टार्ट करके आ रहा हूँ 2 मिनट 2 मिनट अभी आप देखो लोग भाई ऑटो टाइम। रिकॉल पे क्यों नहीं गिर रहे हो? हमें क्या मालूम था आप लोग भाई, हम ऑटो समझे रिकॉल पे कि क्यों ये नहीं भी गिर रहे होगा, हो? मैं समझे कि ये भी होगा। हाँ देख ना, मुझे भी यही लगा कि ये वाला भी ऑटो रिकॉल होगा इसलिए। ज्यादा मौजूद तो लीडर रफीक मैं थोड़ा टाइम नहीं देता हूँ ओका। मैं आ रहा हूँ रफीक भाई, मैं रीस्टार्ट करके आ रहा हूँ, सेट हो गया। यार ये जो साइट पे टीवी चल रहा है देव, इससे क्या करना है, ये बंद नहीं हो सकता? साउंड में तुम जाके समझ गए ना मेरा मकसद, क्या टीवी से मेरी क्या हाँ मुराद हाँ है? समझ गया। हाँ हाँ समझ गया। सो साइड में, राइट साइड में जो टीवी चल रहा है, बैकग्राउंड म्यूजिक बंद। पता नहीं इसका, मेरा तो अभी चल नहीं रहा है, पहले चल रहा था बट अभी वही बार बार उसमें वही आ रहा है साला। इसका पता ही नहीं कि मैं अपने पीसी पे खेलना है। क्या सीन है, इन लोग किधर के चले गए? आ गया माफिया ऑनलाइन। हेलो जी, वेलकम बैक जी। हेलो हेलो, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ग्लेशियर भाई, आप सुनाएं। हमजा भाई की हाल चाल है? बढ़िया बढ़िया। माफिया फिर से ऑफलाइन। मुझे फॉलो करो, आपको पता नहीं है ना आप लोगों को कौन सा वाले में जाना है। ये वाले में देखो, मैं मार्क कर रहा हूँ, इसमें ऑटो रिकॉल मिलता है। रिकॉल का सिर्फ एक जगह आया है, ये रिकॉल इस का पे सिर्फ जाना, एक, इस पे ऑटो रिकॉल मिलता है सिर्फ सिर्फ इस पे मिलता है। हाँ सिर्फ एक ही में, इसी
चाय भी हाँ सिर्फ पिएगा इसी में मिलता है ऑटो रिकॉल, और किसी में भी नहीं मिलता, बाकी किसी में नहीं मिलेगा। गलत है ना यार, यार, ये ये गलत सबका बात मिलना चाहिए, मतलब करीब करीब एक तो और होने चाहिए। बात तो लो ठीक है हमजा भाई। अभी ये देखो, मैं लैंडिंग उधर जा रहा हूँ, ये इधर बैठे है। ये भाई ग्लिच तो होंगे पहले दिनों। हाँ फर्स्ट डे तो बहुत ग्लिच होंगे, बंदे भी शायद पहुंच मेरे गए हैं। कल वाले गिलिच से बड़ा कुछ गिलिच नहीं होगा। कल जो गिलिच हुआ है ना, अभी उससे हम बड़ा कोई कभी नहीं है। ये देखो, अबे ये क्या ग्लिच हुआ? अबे मैं कूदा कहीं और, मतलब अबे यार। भाई एग्जैक्टली मैं वॉल के पीछे था। ग्रोनस आ जा ग्रोनस। मैं कूदा कहीं और, गिरा कहीं और। अच्छा एमएस भी हाई है यार। माफिया तुमने 10 के अंदर नहीं लगाया था राइट? हमारा माफिया कुस रहा है भाई। हाँ हाँ, 10। हमारा वही से भी गेम फजूल होता है और माफिया भी ये ड्रामे करता है भाई हमारे साथ। माफिया का ये मसला है। हमजा को दे दिया करो ना, वो कर लेता। क्या हो गया, देख बंदे ना ग्राउंड से जा रहा था। अबे ये मैं कहाँ कूद रहा हूँ, कहाँ गिर रहा हूँ, ये क्या सीन है? ये कैसे सीन भाई है? गेट पहली में बार देख रहा देखा। था तुम कहाँ चढ़ रहे थे, अच्छा बंदे अभी मैंने कहा तुम भाग के ग्राउंड से। कितने हो? अबे नहीं, मैं ग्रोनस में कूद रहा हूँ बट गिर कहीं और गया हूँ। अबे एमएस बहुत हाई है देव। अबे तो फिर भी एमएस तो गिरना हाई तो है ऐसा नहीं हुआ। बट भाई एमएस के बात नहीं है, मैं छत को तरफ ओ ग्लिच है। वो छत पे उतरेंगे अब उनके 50 मीटर दो पीछे होंगे, इसलिए तो मैंने ये लैंडिंग ऐसा किया। हाँ 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 हाँ, ये मेरे साथ भी हुआ अभी लैंडिंग में। मैं आगे टावर पे गया हुआ था इवेंट छोड़ के। अच्छा देखो दरवाजे खुले हुए हैं। ये देखो नई गेम के लौड़े लगे भाई फुल, कसम खुदा की इतना फजूल चल रहे। ये अभी 1-2 दिन ना होगा ऐसा, सबके मतलब हो गए। ये मैं छत पे था। हाँ, ये एक दिन भी लगा है। एक 3x चाहिए तुम्हें? हाँ चाहिए चाहिए। चलो मैं मेरे को तो कोई का भी एक्स चलेगा, कोई से भी एक्स चलेगा। माफिया भाई प्लीज जब भी गेम चलाओ पहले फिर लीडर ना बनो। जब भी चलाओ प्लीज अल्लाह के वास्ते भाई थोड़ा सा अच्छे वाला भाई लगाया करो प्लीज। भाई क्या फायदा ये बगैर थी अभी। अबे तुम देख आ क्यों मेरे करीब? ठीक है मैं रफीक यहाँ भाई, पे थोड़ा ठीक है। लूट कर रहा चाय को क्या बोलता हूँ? चाय, हाँ। ये 4x ले लेना मुझसे भाई। नहीं हूँ। नहीं 4x तो है, वो 3x चाहिए। नहीं रफीक को बोल रहा हूँ, जब तक टकराएंगे हम जो तो मशीन पीछे से रफीक भाई गाड़ी आई, बंदे आ गए। वो न्यू वाली। फॉरेक्स किधर वो था आगे भाई? निकल गया रफीक भाई। मेरे पास से मैं आ रहा हूँ। तंग नहीं करो। ये आप लोग ये डब्बे क्यों नहीं ओपन कर रहे हो? I got supplies. I got supplies. रफीक भाई इतना टेंशन हो रहा है गेम को लेके, समझ ही नहीं आ रहा है क्या खोलना है क्या नहीं। भाई बोलो गांड पाट के पड़
वो सामान उठाता है और स्कोप चेंज का लौड़ा लगा है। वही तो कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। हाँ एक्चुअली काफी ग्लिचेस हो। भाई कल तो कुछ माउस वगैरह काम नहीं कर रहे थे, ये तो अभी मेरा भाई कई से शेक हो रहा है, शेकिंग हो रहा है, ये क्या है? कल मैं और रफीक भाई हम लोग ने एंगल का रूम लगाया ना, एक तो पहला वो सादा लगा। आप करते भी तो एपीके से करते हो ना आप डाउनलोड पहले? भाई वो उससे किया डाउनलोड। गूगल प्ले किया। चलो भाई किधर जाना है? यार बॉट भी नहीं मिला। ये 3x ले ले भाई, बैग में जगह नहीं मेरे यार। नहीं मेरे को मिल गया मुझे। माफिया तुम्हें क्या चाहिए? बात है, मैं शक्तिमान बन गया हूँ। मैं शक्तिमान बन गया, अभी हट जाओ, मैं बहुत तेजी से दौड़ते हुए जाऊंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा। कोई रेस लगाना चाहेगा मेरे साथ दौड़ने? कुछ ज्यादा ही स्मूथ चल रहा है गेम, मतलब एकदम बन नहीं रहा है खेलते ऐसा, इतना स्मूथ चल रहा है। मुझे 6x ले लो। हाँ यार हाँ। अरे मैं और माफिया तो नहीं मिक्सचर के मेरे पास पास आ 6x गए। है, फेंक दो रफीक भाई। हाँ नहीं फिर मेरे लिए लाओ ना। अरे फिर मेरे लिए लाओ, मेरे पास नहीं है। I got supplies. ये कोई तरीका है? ये मैप में क्या ओपन हो रहा था भाई? ये पावर प्लांट के साथ ये किया है। मैप में चेक करो, वहाँ पे ड्रैगन आ गया ना, ड्रैगन आ गया। कौन सा ड्रैगन? ये भी हमें देखना है भाई। अरे 7 बॉले जमा करोगे तो ड्रैगन मिलता है, बना सकते हो आप। टेबल पे जो 7 बॉले उसको मैं ड्रैगन बना देगा, फिर लोग तुम्हारी लेंगे गोलियों से। अच्छा ये लेते भी है। माफिया के तो बड़ा मुश्किल है माफिया भाई। ये ऊपर लौड़ा इतना देखो। Marked a location. भाई मैंने अपने साथ रडार ऑन कर लिया रफीक, मैंने अपने साथ रडार ऑन कर लिया। अब मैं मैप में देख सकता हूँ कौन कहाँ किधर है। भाई ये कैसे नहीं कभी यूज नहीं होता। नहीं आपके पास शायद फिर वो नहीं होगा ना इनफ कुछ तो। वो रफीक भाई एक ना टाइम दे रहा है थोड़ा सा। आ जाओ ये बंदे ये किधर? कौन लेकर आ रहा है भाई? हमजा है क्या? गाड़ी किधर हमजा? रोड क्रॉस इधर आओ, मेरे पास हो देख। ये रहा। Zero HP है माफिया। Marked a location. यार मैं भी गया। ये यार अरे हमारे पास तो रिकॉल भी नहीं है। जल्दी उठा लो। टेरर गया। यार मैंने भी एक नॉक किया है, दूसरे ने मुझे मार दिया। अबे बाइक से आ रहा है एक बंदा। नहीं जा रहा है। ठीक है आ रहा है यार पीछे से यार। हम लोग यहाँ बैठे माफिया आ गया मार दे, इससे पहले मार दे। भाई माफिया को मैं नहीं समझा सकता भाई, माफिया का भाई बंदा को नहीं मार सकता भाई, पीछे तो रहो।
बंदे को तो नहीं मार सकते भाई, पीछे अरे रहो। पीछे तो था, पहले नहीं आए भाई, जब पीछे हमें तो लग था। गई फिर आप आ गए भाई। देखो लाइव स्ट्रीम देखो। मेरे पीछे फिर तुम इख्तियारात मुझे तो पहले तो सबसे पता चल, कभी आएगा ही नहीं गेम में। हाँ, पहले ही आ जाए फिर बोलो। हमजा को यार, हमजा को तो। अरे पहले उसका गेम आने दे भाई। ओके ओके ओके। हम आपके लीडर बना। हाँ 1 मिनट, वो मैं अचीवमेंट में घुसा हुआ हूँ। तुम गुस्से में हो? नोटिफिकेशन हाँ भाई नोटिफिकेशन लाइट। लो भाई, आपका 20 MS का गेम। वाह बहुत जल्दी लग गया। अरे कभी तुम्हें किसी ने बोला नहीं तुम्हारी आवाज बहुत खतरनाक है? अरे आप किधर जा रहे हो? पावर हम प्लांट लोग किधर? पता नहीं, हम लोग जा रहे हैं लेकिन यार हमको वहां यहाँ से फिर ऑटो रिकॉल पे भी तो जाना है। ऑटो रिकॉल पे भी जाना था ना। ग्लाइड करके चले जाते, थोड़ा बहुत तो पहुंच ही जाते। बंदा मैं रिकॉल लेने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह का दी छोड़। अकेले कहाँ से? हाँ मैं रिकॉल लेता हूँ, गाड़ी लेके जा रहा हूँ। बंदा गाड़ी बे आ जाओ, कहाँ गए साले? ये सबसे नया गाड़ी है ना ये। अरे यार ये भर देता भी मुझे बंदा। डायनासोर की जगह पे रफीक भाई ये गाड़ी आ गई है। दिस इज कॉल्ड पबजी होना के। यार ये तो बहुत गलत है यार, इतनी तेज गाड़ी है, मैं तो रिकॉल भी नहीं ले पाया। नया गाना। ओ अच्छा। हमजा तुम्हारे पास रिकॉल है कि हाँ नहीं? भाई, हाँ रिकॉल है मेरे पास। साला घूम फिर के घूम रहा है मेरा। डरा दिया। फायदा क्या हुआ मतलब भाई, आप तुम लोग को रिकॉल कराने गए थे। मैंने सोचा तुम लोग भी आ जाओगे। यार मैं फंस गया था यार, वो उनकी वो शिप ना बहुत तेज चलती है। मैं मॉन्स्टर ट्रक पे था, भगा भगा के थक गया, साला भागा ही नहीं मेरा मॉन्स्टर ट्रक। मैं बिल्कुल सेफ उतर रहा हूँ, तुम लोग तो रिकॉल देने के लिए फिर सही है। हाँ इधर थोड़ा पे सा, गाड़ी खड़ी है, हाँ ले कर रहा हूँ क्या? हाँ ले आओ। हम भी रिकॉल लेने ट्राई कर रहे हैं, हम लोग जाने के रिकॉल। चले क्या रिकॉल पे? चलो। अभी इतना लंबा सही है, सही में मेरे को लगा पहले ग्लिच होगा। ये तो सही में कुछ है। बुर्ज खलीफा है क्या? बुर्ज खलीफा।
इसके कोई ना तुम अंदर रिकॉल ले लो जल्दी। एंटर। जा अरे रहे हैं, रफीक भाई को उठा रहे हैं। अबे अबे ये क्या है? अरे वेरी गुड। अबे बंदा। अबे अच्छा, एक दूसरे को मार भी नहीं सकते, ये सही है। ये क्या है? मारो इसको, मारो मारो साले को। अच्छा मुक्के में जा रहा है क्या? मुक्के में जा रहा है? नहीं जा रहा है। अबे इसको बाहर कैसे निकलते हैं? अबे आजा आजा आजा, वो मारेगा मारेगा, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, नीचे आओ नीचे आओ नीचे 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 कूदो। अबे नीचे कूद जाओ। किधर है किधर है किधर है? पता नहीं पता नहीं पता नहीं, वो कहीं तो लैंड किया है, पता नहीं। कहीं दूर लैंड हुआ होगा हमसे। हाँ दूर भागा होगा। अच्छा ये गाड़ी में चलते हैं। नहीं वो हमारी है। चलो 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 चलो, माफिया बैठा के जल्दी हमको। ये माफिया लाया ना। चलो 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 चलो, आ जाओ बैठो बैठो। कौन बैठो जल्दी। रफीक भाई वो दूसरी वाली गाड़ी से आया है। पहले रिकॉल ले लेते हैं। बूस्ट मार दे, बूस्ट मार। ये हमजा भाई का मॉन्स्टर ट्रक खड़ा हुआ है। हाँ यार कसम क्या, साला इतना मर मर के चल रहा था ना कुत्ते का, और वो इतना भाग रहा था, तो समझ नहीं आ पाया हो क्या रहा। मेरा अभी ऐसी नहीं स्मूथ चल रहा है। अच्छा जैसे कोई रिकॉल बंदा जब आ मिल रहा जाए है तो बता देना, फिर मैं यहाँ से ना, निकलूँ आस्ते आस्ते। रिकॉल मिल गया, रिकॉल मिल गया, निकल जाए। हाँ रिकॉल मिल गया, चलो निकल। किधर गया मतलब? चलाएं, हम चलाएंगे। ग्लेशियर पे गाड़ी में छोड़ दी है। हाँ बैठो बैठो बैठाओ ना। ये लो क्या चला रहा है, कौन ये? ये था कौन? ये गाड़ी नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, पीछे नहीं हो रहा। नहीं हो रहा, फिर बस नहीं हो रहा। मैंने ट्राई किया था। हाँ यही सीन मेरे साथ भी हो रहा था, ये देखे ना। अच्छा आप लोग को ये पता है कि आप लोग जब नॉक होते हो तो आप लोग फिर भी दरवाजा ऑन ऑफ कर सकते हो, ये पता है ना? I need attachments. हे। बे फाइट हो रही है आगे। अबे यहाँ पे बंदा है, अबे कैंप करके रखा है। फक, अबे कैसा कैंप करके रखा है यहाँ पे? जिसने क्या? यार इसको मारो यार, कैसा कैंपर है भाई, बहुत गंदा कैंप करके रखा है। वो पेड़ के पीछे कैंप किया हुआ है, एकदम चुपचाप बैठा हुआ है बिना आवाज। यार ये देखो, हाँ वहीं पे जहाँ पे मार रहे हो ना, वहीं पे देख के। हाँ यही था यार, मेरे डब्बा मत लूटना। माई डब्बा। भाई हमजा भाई दोबारा से हो गए। के पास पता ही है लोग। अबे यार ये क्या चूतिया पाया यार।
कैसे मार ले रहा अरे है? भाई भाई नहीं इनको नजर आ रहे हैं यार भाई। मेरे को मैं एक भी हीलिंग देना जल्दी। हीलिंग हीलिंग हीलिंग। नहीं पता नहीं पता, कोई आइडिया नहीं है। हीलिंग देना माफिया। Thank you. ये लीजिए। ये सीन ये देखें। एक बुलेट पावर देखें देखें। अरे वेरी गुड। था किधर ये ओके तो बता दो। बैठो 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 माफिया। अच्छा फिर से लूट कर रहे हो। नहीं मैं बैठा हुआ हूँ। कहाँ चले गए? एक आधा किलो रहा है। चल 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 नंबर 3 पे। इधर है रस्ते वन भी वन ले रहा था हमसे। सॉरी। और रफीक भाई का बड़ा डैमेज। Thank you. ध्यान से ये लोग वापस आ सकते हैं। मेरे को कोई भी लूट नहीं करनी देता। ओके मैं फाइट ले लेता हूँ। बैठ गया। चलाऊंगा नहीं बैठूंगा। हमारा बस रिकॉल जाने वाला है रफीक भाई। ये हाँ नहीं हाँ ये एक दो दिन खोखो रफीक हाँ। भाई चलेगा। एक दो दिन तो चलेगा। प्लस हमको ना सिर्फ हर बार नहीं, हर बार हमको ना इवेंट पे ही कूदना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जितना भी दूर रहे इवेंट पे ही कूदना पड़ेगा, क्योंकि वहीं पे बंदे काफी आते हैं। हाँ ये और प्लस ये एक ही जगह पे सिर्फ रिकॉल दे रहा ना इस बार। ये और ज्यादा खराब हो रहा है। नहीं वो मैं नीचे जरा आ गया ड्रॉप फट देख से। कर आ जाऊं। Marked a location. चलो चलो साइड से चलते मारा हैं ना, रफीक भाई, चलते साइड हैं। से मार ले सकते हैं। अल्ट्रा एक्टिवेटेड। पता नहीं क्या अल्ट्रा। वो राइट से आ रहा है। भाग गया। गाड़ी निकाली है ना उन लोगों ने। हाँ तो बहुत बहुत तेज भागता है भाई ये गाड़ी, बहुत सैंडविच तेज। है। हाँ अरे लो ओके मेरे ऊपर ही आ गए हैं ये लोग। तुम्हारे ऊपर। हाँ Marked a यहाँ घरों पे आए हुए हैं location. घरों पे। हाँ आप लोग जोन में है ना? ओपी हमजा जोन भी को आप बोल लोगों क्यों पे। नहीं। हमजा भाई फुल सन्नाटे में है गेम प्ले देखते हुए। देख के रफीक भाई आप लोगों को सैंडविच कर देंगे ये लोग। किधर किधर बैक रफीक भाई डाउन। किधर।
यहाँ पे रही हो, यहाँ पे डाउन 70 के पीछे। ग्लेशियर में इसको फिनिश करो, ग्लेशियर पे। अबे मेरे पास एक बंदा भी है। किधर है बताएं, बताएं किधर है। बे मार 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 फिया। अरे ये पहले कर देता यही चीज। नहीं, मैं पुश कराने से मना कर रहा था, इसीलिए उसकी हेल्थ बहुत डाउन हो गई थी। चलो कोई नहीं, एक ही बंदा है बस। आ गया मेरे रफीक भाई, आपको बचाने आ गया। रफीक भाई बोलेंगे अरे हो घंटे से मैं बचा। मारूं क्या? भर दिया। भर दिया। Victory belongs to us. Victory belongs to us. Victory belongs to us. रफीक भाई इस तरफ है, रफीक भाई इस तरफ है। रफीक भाई ये नया विक्ट्री इमोट चेक करें। नसीर भाई ग्लिच नो डेर। नहीं अगर आ रहे तो मैं जा रहा हूँ, नासिर भाई आ रहे तो मैं जा रहा हूँ, ठीक है। वो आ रहे हैं क्या नासिर भाई? हेलो हेलो हेलो, बता दो जल्दी जल्दी। हेलो हेलो, सारे आ गए हैं, वो सारे आ नासिर आ गए रहा हैं, है क्या सबने नासिर? रेडी कर दिया। नहीं मैं बोला नासिर भाई आ रहे हैं तो फिर मैं चला जाऊंगा, अगर वो आ रहे हैं तो। हाँ क्या ये सीन है? रफीक भाई बताएंगे। रफीक भाई ने माइक बंद किया हुआ है। नहीं मेरे ख्याल से वो बोल रहे थे ना रफीक भाई कि वो ऑलरेडी बोल के रखे है, तो ले लो उन्हीं को खिला लो। ये अल्टीमेट सूट जो है ये उसमें आया है ना। हाँ मैंने इसमें ट्राई लिया है। मैंने इसमें कितनी यूसी लगाई है टोटल 30 60। मैंने 1620 1620। मुझे फॉलो करो, मुझे फॉलो करो सर। I won my last match. हाँ ठीक है इसमें नासिर भाई देना आ जाओ चाहिए तब भी तक। बॉम्ब। मैं भी जरा एसी में बैठ जाऊँ, ठंडा ठंडा हो जाए, गार्डन गार्डन हो जाए, बहुत मजा आ रही है। नासिर भाई ये गेम खत्म होते होते आ जाओ। नासिर भाई का टैबलेट है, वो आ जाएंगे आराम जल्दी से। हमजा माफिया ग्लेशियर मेरा नाम आया। चारों का नाम आया भाई इसमें, अगर मेरा चिकन डिनर नहीं मिला तो क्या ही फायदा। मेरा नाम आया है, एक तो स्वामी का नाम आया। ये क्या है? गेम टट्टी है, यही है बस। मैंने अनपढ़ मारा। अबे भाई ये गेम टट्टी है यार, वाकई में टट्टी है, क्या मैं नहीं खेल रहा। भाई?
ऐसी बैंड का सगा मारे। माफिया तेरे सामने फिनिश कर दिया मुझे। मैं आ रहा हूँ तो फिर भी काम भाई आपका मास देने देख भाई किधर उतर रहे हो? रौनक कर रहे हो? बे यार क्या ही रफीक टट्टी भाई है। माइक ऑफ नहीं रफीक भाई वापस जा रहे हैं। क्यों? अबे ना करो सही में। हाँ रफीक भाई वापस जा रहे हैं बल्कि रफीक भाई ऑफलाइन है। नहीं ऑनलाइन है रफीक भाई ऑनलाइन है। अबे ये बोल क्यों नहीं ब्लूमस्टर रहा? जा रहे हैं नू वो हमजा भाई ब्लूमस्टर जा रहे हैं। तो सही ना मैंने हमजा भाई का नाम नूब तो लिया है सही तो लिया है बे गलत क्या बोला है? मेरा पता है लास्ट गेम में मैं मेरे पास सारे हो गए थे सारे स्टार्स हो गए थे सीधे 6 स्टार नहीं हुआ था 6 बॉल। अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज एंड लॉ इस पूरे सीजन लैंडिंग के लॉ लग रहे हैं। अभी ये जो नया गाना है कैसा टट्टी गाना है। देखने में मैंने अजीब शायद सी है। रेंज में चलाया नहीं कलर ही दिखने में उसका एकदम अजीब सा है शॉटगन और जैसी कुछ लगती है कमेंट थोड़ी कर सी। दो। हाँ मैं आपको चलो कुछ आ जाओ बोलने वाला था चलो। शॉटगन आया है एक न्यू शॉटगन आया है मैं देख रहा नहीं शॉटगन क्या नहीं तो है नहीं। आ जाओ ये मारते हैं। आ जाओ। इनको छोड़ने का नहीं है भाई बिल्कुल भी। अबे तुम लोग आ ही नहीं रहे हो मैं पहुंच गया हूँ। आ गया कौन है? आजा आजा जब लूट कर रहा है एक बंदा। मार करो। वहां से वो रफीक भाई निकला मेरे एक ख्याल से कुआ जैसा। रनिंग पे लगा है। Marked a एक इसके location. अंदर है और Marked एक a इसके अंदर है। location. Marked a location. बाबा साईं से पीछे से नहीं आओ दिल में धक धक होता है। एक तो मेन रूम में होगा है ना मेन वाला जो डोम है। इधर ही हूँ भाई मैं। हाँ नहीं पहले तू मार रहे Marked a भाई। location. इसके अंदर है। रफीक भाई मेनू बचाने आ जाओ रफीक भाई। मुक्के मारना देव फिनिशिंग देव। हाँ तो जाओ ना मारो जाओ जो। इसके पीछे मैं अबे जा रहा जल्दी। था। अबे मुक्के तुम्हारे मुक्के के चक्कर में मर गया मैं। हाँ लेकिन मुझे मारेगा था ना। अबे ये वापस गिरेगा तुम पहले मुझे उठाओ वो सब हाँ छोड़ कोई दो। बात नहीं। हट यहाँ से। गाड़ी आ अबे रही है आजा यहाँ पे आजा हमजा गाड़ी आ प्लीज रही है छोड़ दे गाड़ी सब। आ रही है और तेज वाली गाड़ी आ रही है। मुक्के छोड़ दो मुझे। आने दो आने दो आने दो। हाँ Thank you. रफीक भाई ये यस करें। स्कोप भी यस करो। नहीं ये स्कोप नहीं है रफीक भाई होला है होला। मार दिया। गन हम भी चला लेते हैं और ऐसे ही चलाते हैं। ना सिर्फ ये ग्लिच है मेरा लैंडिंग देखा ना सिर्फ भाई इससे सिर्फ देखो ऐसा ग्लिच होता है लवड़ा। मैं ऊपर छत पे था और नीचे जब गिरा। माफिया एक पेटी तो चौड़ा भी कर भाई उधर से भी साफ किया इस पे भी आ रहे थे वेरी गुड। नहीं रफीक भाई दोनों पे रफीक भाई 5 की एमओ मिली 7 की एमओ नहीं मिली।
बल्कि मैं हीरो I got रफीक भाई टीपी supplies. I got supplies. टीपी मार कर हाँ दे। मैंने ट्रैक्टर लेकर आए। मुझे 4x चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। वहाँ 4x भी मिल गया मुझे, मैं आ रहा हूँ। मेरे से लो बस वही 4x देखते लो। रहो। ओके मैं आया 1 सेकंड। कौन है, कहाँ है, किधर है? कौन सा नंबर है यहाँ? अरे ये क्या सीन है? मिल गया। Awesome. Awesome. भाई ये स्कोप वगैरह बहुत फजूल, पेंगना वगैरह वगैरह, ये देखो ये क्या है? आप लोगों का ये भी मसला है कि सिर्फ मेरा है? जब स्कोप चेंज करो बहुत नहीं कोई मसला क्या नहीं क्या है। क्या? नहीं स्कोप मेरा तो ड्रॉप सही तो हो रहा नहीं है। हो रहा है। अच्छा भाई ये इसका चेक करो। मेरा एक ही मसला है, मेरा लैंडिंग का ग्लिच हो रहा है, बाकी मेरा कोई मसला नहीं है। वो गड़िया उठाओ भाई वो। पे बंदे हमजा के मान लो पास। तुम्हारी। किधर से मारा? देखो देव ने बोला नहीं, नहीं पता, देव ईमानदारी से नहीं पता। एक ये है, नहीं गंदी पड़ी। Marked a location. ये तो बोट मार था। दिया। नहीं ये बोट था। नहीं ये तो बॉट था। नहीं ये बॉट था। बंदा Watch इधर फिर ये से कहाँ मारा है। गया ये? अरे हमको भी ये बिठाओ, ऐसा हमको भी टट्टी बिठाओ। गाड़ी है रफीक भाई। सबको बिठाओ, चारों को बिठाओ। नहीं बैठ सकते, सब नहीं बैठ सकते। सब बैठ सकते हैं नहीं भाई। चार नहीं बैठ सकते। पे बंदा है। फायर तो क्या करो, फिनिश करेगा माफिया। एक तो भाई अस्तगफिरुल्लाह भाई, घड़ी में बैठो भाई, अरे चलाया तो करो। आ रहे वो चलाया तो करो भाई, और छोड़ो सब कुछ भाई। Thank you. Thank you. बे नहीं यार, कहाँ से पड़ी? ये इधर से सामने लेटा हुआ है, देखो ये सामने आ गया, सामने आ गया। पड़ी है और लॉबली दूर से मार रफीक भाई, एक जन मुझे हाथ पर लगा दो भाई। अगर मैंने हाथ लगा दूं। तो लगा चेंज ले। करेगा। मैं आ रहा हूँ। Thank you. पीछे से कोई आया, पीछे से कोई आया। Help. बिना हीलिंग करे उठूंगा और लौड़े पे चढ़ाओ इसको। ये बंदों ने सेम ओके। वही की। हाँ यही है, अभी मुक्की पे एक कर और रहे बंदा आ थे। रहा है पीछे हमारे Thank you. किधर से माफिया मार छोड़ दे, कर? अभी हमारे हाथ ऐसे लगा किया पहले। था। माफिया हाथ लगा पहले। खेल है, खेल ग्लेशियर भाई, खेलता हमारे पास तो खेल भी नहीं है, ये लो क्योंकि माफिया ये भाई लो, ये लो, हाँ, drop सब पेटियां साफ करता है भाई माफिया, और दूसरे का नहीं देखते। हाय 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 हाय। यार मैं तो बोल रहा हूँ जल्दी निकलो, हील बहुत जा रही है। भाई मैंने आप लोगों के पास गाड़ियां लगाई। जाओ जाओ भाई, आप छोड़ो लोगों छोड़ो के चलते मेरे को डांट छोड़ो, खुद अपना काम करेंगे हर भाई। पे चल जा। यहाँ आगे बंदा बैठा हुआ है। ये ऊपर वाले पे जाओ, ये क्या है भाई? ये लेफ्ट वाले पे। अभी रफीक भाई जोन में चलो जरा सा। अबे बंदा है, भागे मर गया, हमारे पास मर बंदे गया। हैं रफीक, हमारे पास बंदे हैं। एक नोक, ये नोक है। Marked a कितना location. गंदा मार। इसको भी बहुत जलील किया था। आई मर गए सब। सारे मर गए ऑलरेडी Watch यहाँ out. पे। मर गए भाई, मर गए। स्मोक के अंदर भी। जी भाई। वेरी गुड। लूट करते हैं अभी। हैकर का हम पे वो लगाना है कॉम्प्लीमेंट। अच्छा यार रफीक भाई सॉरी, मैंने देखा नहीं, उड़ गए थे आप, फिर ये तरह चला आप पीछे सामने मेरे। 6x है इसके साथ। एमजे पहले चलानी गैटी नहीं जाएगा।
दिल तो कर रहा है लेकिन मैं उतरूंगा नहीं। अबे नहीं चल रही, इसको छोड़ दो। ये क्यों हुआ नहीं भाई? चल रही, मुझसे बहुत मुश्किल से चल रही है। रफीक भाई से पूछा, रफीक भाई के साथ चटकी भी थी जब मैं चला रहा था। ये अच्छा अच्छा, ये बोरी बोरी भाई का वो खेल भी पूरा होता है और वो भी देते हैं। Marked an airdrop. Marked an airdrop. बंदा 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 माफिया पे बंदा। कैसा? नहीं नहीं, ये क्या सब बन रहा है भाई? ये Watch जोन out. नेक्स्ट क्या? जोन है कि ये क्या है भाई? ये क्या चल रहा है? ये एक बेटा है इधर, ये बेगैरत। मिल गया ये लास्ट यार। कैसे हैं? स्टार टोको। We are number one. टोको साले। रफीक We're भाई the ये डांस best. चेक करो। हाँ। Victory belongs to us. इधर आओ, फुल क्लब बना हुआ है। वही तो। चले 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 चले। क्या सीन है फिर? नासिर भाई आ रहे कि नहीं आ रहे? मैं तो वेट कर रहा है भाई, मैं कोई बोले क्या मैं बोलो। बोल तो रहे थे एक गेम खेलो करके, फिर उसके बाद आ रहे। तो पूछो जल्दी, फिर हम चले जाएंगे। इसका रिकॉल है ना नासिर? हाँ रिबॉन। रेडी कर दिया है हाँ मैंने। रिबॉन बैठा है। हाँ चलो चलो चलो। रिबोरन ये टीम बना, एक बार टीम बना लेते हैं। बाहर बाहर काफी आ ही नहीं रखा यार। ग्लेशियर भाई किधर गया? वो बाहर चला गया थे तो हम लोग नासिर आ गया ना, इसलिए। सॉरी सॉरी रफीक भाई, वो एक कॉल जरा मिला करके मैं दे रहा था ना। तो किसी और की स्पॉट में चला गया होगा तो नासिर। और भाई क्या है, तुम्हारी अपडेट हुई थोड़ी नासिर भाई? मैं बस एक कॉल मिला के दे रहा था पापा को। मेरा तो नहीं है।
वालेकुम अस्सलाम जी नसर भाई। हाँ सही सब के साथ अस्सलाम वालेकुम नासिर भाई कई फालू का या यू हतलाम जा और ठीक है रेडा है इसमें नहीं है अच्छा वालेकुम सलाम क्या हिसाब किताब है हिसाब किताब ये है कि 7 बॉल मिल नहीं रहा 7 बॉल मिल नहीं रहे हम लोगों को पबजी वाले हम लोगों का घोटा बना के खा रहे हैं टेक्निक है तुम लोग को ये बताओ अरे रफी भाई इसका मैंने अभी याद आया ग्लेशियर का भी देखा निकल गया क्या हुआ? नहीं एक्सो को क्या कहते हैं उसको ग्लेशियर का ये मम्मी सूट कौन सा निकला है एक्सो करा था कौन सा सूट भाई होते हैं ये अल्टीमेट मिथिक अल्टीमेट इसका भी निकल गया इसका पूछा ही नहीं इससे मैंने कितने यूसी में निकला यार मूड मेरा भी हो रहा है लेकिन लोगों की कितने यूसी गायब हो रहे हैं टेंशन होती है बेकार है मैं हकीकत बताऊं बेकार है आप उसके ऊपर गौर करो अजीब अजीब से लैंग्वेज लिखे हुए हैं बाद में इस पे भी जो है ना वो लगेगा क्या बोलते हैं उसको वो पाकिस्तानी जो होते हैं ना फारिग वो लोग इससे भी कुछ ना कुछ निकालेंगे निकालना लो एक जो रफीक भाई के पास मम्मी सूट है सफेद वाला और पीला वाला वो दोनों काम का बस मुझे किसी ने रिक्वेस्ट ही नहीं भेजा था मैं जबकि सबको हर 2 सेकंड बाद भेजता हूँ नसर भाई हमारा खुद लौड़े लगे अब तो रिक्वेस्ट की पड़ी है तो रिक्वेस्ट तो भेजा करो ना ऐसे लोड़ी लगे क्या बात तो बंदा लोग ही नहीं भेजता नसर बाद में ये देखेंगे हालात बड़ा खराब है नासिर भाई हमजा भाई किधर से मर पड़ रही है आप लोगों को यार ये हर जगह से हर जगह से यार ये पीछे से मार रहा है हमारे चारों तरफ बंदे क्या यार आपके ग्रोनस से तो मैं नहीं आऊंगा हाँ मैं ग्रोनस जा रहा हूँ मैं आ रहा हूँ तुम लोग की तरफ रिकॉल उठा लेते ना नहीं रिक्वेस्ट नहीं है मुझे लगा गवर्नर हाउस तो बोल रहा इसको बोल रहा रिकॉर्ड कर लेते गवर्नर हाउस आ गया हेलो हेलो बोटात बेटा बंदे उतरे मैं अभी बता रहा हूँ भाई गेट खुला हुआ है बात नहीं बोलना बता रहा नहीं इधर है बंदे हर जगह क्या यार ऐड तोड़ दिए साले की रफी भाई हिट मार्क आया था आपके पास इस साले घर पे रफी भाई एक नहीं 3 है एक प्रॉब्लम इसको छत पे आने दे इसको छत पे आने दे छत पे आ नहीं रहा ना ये हरामी रफी पे रोटेशन दे रहा हूँ इसको छत पे अटैक करने के लिए मेरा लौड़े लगाएगा फिर आपका रोटेशन का फायदा नहीं होता हर टाइम भाई किधर है माफिया ऐसा रोटेशन कौन करता है भाई जो आप इसी घर पे रफी भाई इसी घर पे नीचे अंदर है बाहर है इसी घर पे कोने पे आ गया बाहर है मेरे साइड पे तो नहीं है भाई
ये तो ऑफलाइन था। ये ऑफ हो गया है, वरना इसमें शॉर्ट गन है क्लोजिंग के लिए। मैं पैदल नहीं आ रहा। इस बार एल की एम मेरे साथ हमारा एक्सटेंडेड मैग नहीं है वो। रफी भाई आप एसएमजी एक्सटेंडेड मैग मार कर दीजिएगा। गाड़ी मिल गया, I got मैं गाड़ी से आ supplies. रहा हूँ। गाड़ी पीछे बंदी। रिकॉल उठाओ ना सर भाई, पी रहा हो। मैं अभी आ गया। ये क्या शो हो रहा है ये वाला? Watch out. इस पे चलो माफिया, गाड़ी में बैठो। क्या हुआ? गाड़ी में बैठो मेरे साथ। हो गया। ये गाड़ी की हैं? आवाज मुझे नहीं आ रही, आप लोगों को भी नहीं आ रही गाड़ी की आवाज? नहीं यहाँ पर डाउनलोड नहीं आवाज आ नहीं, रही है, आवाज आ रही है। गाड़ी आ रही है रफी भाई न्यू वाली किधर से? इस Watch साइड से। out. पीछे से रफी भाई बॉट आया, बॉट मारे। बैठो बैठो, 1 सेकंड बैठो, मुझे एक चीज पे जाना है। 1 सेकंड। बैठ गए। आओ आओ नासिर, इधर आओ। इधर से कुछ तो है। अभी अगर हमजा लीव करे उनको बोलेगा कि ना लीव करो, कुछ तो है। क्या चीज? ठीक है, रफी भाई क्या कहते हैं? समझ नहीं। भाई अभी आप अगर आप लीव वो जो करोगे। 7 बॉलें जमा करोगे ना आपने, हाँ नहीं ग्लेशियर भाई ने कुछ। कोई आ रहा है, वेट लीव करो। मैं बोल रहा हूँ भाई कि अगर आपने अरे लीव किया उधर भी ऑप्शन आता है कि क्यों लीव किया भाई गेम का। चेक करता हूँ। You will still have a chance to win the match. Still have a chance. यस ये किया है, ये मैं बता रहा हूँ कि ये किधर है ये चांस। ये तो मैं बता रहा रफी हूँ। भाई रिकॉर्ड डाल के देखें इनको। ये पावर प्लांट की तरफ देखो, एक बैग है, उधर जाओ पता चलेगा। ये डंडे पे बॉलें मिली है, 7 बॉलें चाहिए। हाँ हाँ हाँ, ये 7 बोले ये किया है। 7 बॉल। ये तो मार्क मेरे पास देखो, एक भी मार्क नहीं है, मार्क पता नहीं। मार्क पे जाओ, मार्क पे इधर ही होगा कुछ। नहीं हो तो गाड़ी आए ना सर भाई, जो नहीं आई है। ये 7 बॉल्स पूरे करने हैं कि क्या करने हैं भाई। हाँ ये ये 7 पूरी बॉलें करो, तुम्हारे फिर वो देखो ड्रैगन मार्केट के बनता है। नीचे 7 बॉलें बनी भी आ रही हैं। जब तक ये नहीं भरेंगी ना, फिर जब तक आप कर नहीं सकते। अच्छा अब तक मैं समझा नहीं, मैं समझा कि नहीं कोई आ गया, आप लीव करने का कह रहे हो।
एजी इनकॉन हाँ ये इधर है। इनकॉन यहाँ बैठा इनोसेंट। पीछे से गाड़ी आ गई। या गई। आना जाना कर रहा है। आगे चलो जी, इसका शोर बहुत है। रोक दिया है, रोक दिया इधर पे। Watch out! बंदे ये है नासिर भाई। Marked a location. ओके, एक तो है मेरी तरफ है। आओ माफिया, माफिया किधर जा रहा है उधर भाई? मैं नासिर भाई के पास जा रहा हूँ। नासिर किधर है? आप किधर है भाई? हाँ आप किधर हो? अब मुझे खमजा इसका लॉजिक बताओ भाई, इनका मुझे लॉजिक बताओ जो माफिया बोल रहा है कि मैं नासिर के नजदीक जा रहा हूँ। ये है लॉजिक। एक मेरे नीचे, पता नहीं इसको मार दिया कि ये अभी भी है। 3 बंदे हैं माफिया नासिर। देखो, आपके नीचे कोई नहीं है, आपके नीचे कोई नहीं है। हाँ ये कौन था? इसका ये कौन था? खत्म। ये आईजी इनोसेंट बैठा है। ओ पीछे से पड़ रही है। ये रंडी के अल्लाह अकबर दिमाग या मखती फुल स्क्वाड आया। रुक जा रिबन भाई। फिनिश ऑटोमेटिकली फिनिश किया करो प्लीज। Help! सदा रंडी बोल के इधर रफीक को लवाचो। वो दस एक एकदम मखा उसरतना चेता शौक पुराशी। ढेर शौक था इसका रफीक भाई, खपा नची ये पाकिस्तानी लोबी सर रेस्टोरेंट कटा शौक था। मैं पाकिस्तानियान को नदी انت باكستاني بنبي नदी لغو دي पाकिस्तानिया كيكا غادي يرى كذا باكستاني لغو تو زبدي كابير بچا ओपी नंबर उस्मान 4 को साइड से पाकिस्तानी मार है लغो ना। नासिर जैसे हमने वो थर्ड पार्टी उस पे किया ऐसे इन लोगों ने हम पे थर्ड पार्टी किया। 1 मिनट ये भाई ये जो रैंक है रैंक नो सॉरी ये जो नया इवेंट आया है, नया अपडेट आया है भाई, मैप ओपन करो फिर आपको मालूम होता है कि फाइट किधर चल रही है भाई। मैप नासिर भाई नया या अपडेट में यह है कि मैप ओपन करो फिर एक लाइन गोल लाइन होता है, जिधर फाइट चलती है वो गोल लाइन शो करता है कि इधर फाइट चल रही है। ये अभी मुझे समझ में आया। जैसे हमने नासिर भाई जैसे हमने इस लोगों पे थर्ड पार्टी किया ऐसा हम पे भी थर्ड पार्टी हो गई। ऑलमोस्ट वो कुगला नो भाई अब कुछ रहे हो भाई, ये काम करते हैं माफिया भाई। 1 मिनट आप लोग एक टीडीएम वगैरह के लो, हम नमाज पढ़ के आते हैं। जी नमाज ओका हो गया रफीक भाई, ओका हो गया। ओके मैं भी नमाज पढ़ के आता हूँ। खैर है।
قانون سره بغیر بل کار شته خو بس ما جواب ترکستان نشان کنه نه لیوي کولګو نشته پته د لونیانو چې چرته لاړل هغه خو ما په خو څه خو ریسټارټ کوم په 10 هبيو منټ یو شي راغله اوري په 10 منټ یو شي ولې دومره ټیم خو اوس ما کوم یو میپ لګولې لګولې وای دا نوی اپډیټ کې کوم ګلیچونه راغلي دي ما ته څه نه ښکاري دومره نصیر بای دومره لیک کوي شیکینګ ون گیم او سکوپونه وکړه چې چینج کوي ماوس فل زور ور کوي په ماوس فل زور ور کوي چې څه بیگ نه ترې په باندې فل ماوس ته زور ور کوي او هغه سی ایچ کې چینل ولا نه دا هغه فکسینګ خي هغه ولا وګوره دا شي سیټ شي خپل ویډیو مخکې کوي نصیر بای خلک په لوړ مې نه پويږي خپل ویډیو ته وخته وی ټوله ویډیو مخکې کوي نه هغه غریب څه واچینګ خو 5 واچینګ وي 4 واچینګ 5 غاوه ته ویل شي نصیر بای یو میټ ما دا گیم په بل طریقه باندې انسټال کړی دی پوښ په مافیا راغې زبې شپې دا څه کوم اوس نه شپې ډیلیټ کوم بیا انسټال کوم پوښ وې دا گیم او اپډیټ مې پرون کو نه هغه صحیح طریقه نه وی نه بس به یو کار وکړه هر کله اپډیټ تر شي به اپډیټ یې ما کو ډیلیټ کوای به انسټال کوه او دا مته کاس خو ویلی وی ولې تاسو ولنده مسلې ما ته خو څه پرڅ ګلیچ نشو ښکار اوس مال انټرنیټ خطه ز نصیر بای په 15-20 منټ کې ټول ډاونلوډینګ پورا کیږي مړه خو بسوي دا خور کې راځي ډېر بی غیرت اپډیټ راغلی دا سات کوین دي کتی هغه پورا کی بیا کا هوا ته ورکی خي هوا کې مزلې کوي فایر ولې لسونه دا څه مسخره او د جوړه کړیا قسم ده مړه مخکې چرته مخکې ولا پبګ چرته وسوله نور کې راغلی اسد بلونه چې پورا کو بیسه شي کیږي نصیر بای کا هوا کې خيږي اچھا قسم ده هوا او منو هوا ته وخیږي لکه کوم کیمپر وی کنه کانی شاته ونی شاته هغه باندې ور لګه سالته کې نو پیه کې دا ریټ څنګه لوړ جوړ کړی دی کورو نه ډیر فزول بکواسه جوړ کړی اپډیټ ډیر انتهایی په بغیر ډراګن بول ولا کارټون ولا اونر نه دا او هغه شورتې دي چې بس ایڈورټایز وکړه پیسې مو نه واله او پیسې باندې دي ها هغه ورته ایڈورټایز کی هغه پیسې بلا او هغه ایڈورټایز کی به د پب کې ولې هغه ولا سپونه روستل هغه ولا په یوسی به خلک بل خلک ډبل فائدہ کوي او کنه نصیر بای پبجی ته مکمله غاده فائدہ راسل وای دا خو یو کاسه سه خوان دې پر جوړ کړو دا گیم سو لکه د نور گیمونه چې جوړ کی او بس نصیب یې کار وکړو داسې مشهور کولو Assalamu alaikum once again. وعلیکم السلام I am back.
माफी एक काम करते मैं मैंने पूरा और ना अपने कोई आपको जो मैंने बोलेंगे अपने Number 4, you are going for 7, हाँ Titi Kumahava or Titi Kumalit. हमने भाई नासिर ईमेल भाई से की आवाज अपडेट मुझे किया बहुत था स्लो आ हमने रहा। कल से अपडेट किया था मैं ये बता रहा हूँ भाई ओके जी तो मैं अगेन ये आप उसको करें। तो मैं बता रहा हूँ कि डिलीट करो फिर करो हाँ? फिर मेरे ख्याल में ठीक हो जाएगा हाँ डन हो गया रफीक भाई, लोग तो आ रहे डन हैं, हो गया मैं रफीक भाई। खुद रात को कर रहा हूँ बंदे अभी आ रहे हैं देखते हैं। भाई बंदे नासिर भाई आ रहे हैं आ रहे हैं, हाँ आ मैं गए। भी रहा था। हाँ आ रहे हैं। अभी इनका पिछवाड़ा अभी में मेरा सुझा देता हूँ, लैंडिंग सबर किधर करो बस। होगा अभी देखो नासिर भाई लाइव फिर देखो कि मैं किधर होऊंगा नहीं अभी तो थोड़ा ठीक हो गया मैं खुद इंतजार कर रहा हूँ मैं कहाँ जाऊँ। बच गया ससुरा। इस घर में नासिर कस शर्त थे वाला पता नहीं कहाँ कहाँ से कहाँ वाला। माँ किट हम लग रहा था किट नहीं था। वल्लाही हर जगह बैठे हैं बंदे। तो मेरे सामने एक बंदा है। Thank you. Look for someone is in front of me, baby. Yeah. Marked a खाली तो ही location. कहूँ। بس رشا لا سيزوي ده طملا صملا بريك ده بخبل راسي اوس ټول وچلې شي ها हाँ 4x वाला 4x वाला। हम लोग जी मेरे को चालू। मैं मर गया। अब په ورزي ها عاشق باندې روان دي आओ इधर आओ इधर आओ। Where are you going, number चोल? इस पर खूर जोर मंड वाला का तमाम लड़ रहा है वो। दलदा यो बल दे नसीर भाई बल दे लाओगे ना पट के माँ प्योर कुछ पाकिस्तानी लोग ही जा। इधर जाना है चर्सी। मैं नासिर में सेफ चढ़ाया हूँ। मैं सेफ चढ़ा गया। मैंने बोला कि गवर्नर हाउस जाना बेकार है। बड़ा ही बेगैरत किस्म का अपडेट पूरी हिस्ट्री पावर में प्लांट के ऐसे साथ ही वाले गया। 4 घरों पे हूँ। आप भी आ जाना फिर मेरे। आ रहा हूँ। मैं पता है इवेंट पे आप लोगों के पीछे था बिल्कुल। आप लोगों ने रिकॉर्ड ही नहीं की, वो रिवाइव ही नहीं दिया। जीरो किल के साथ आगे बेगैरत चले बंदे की कसम से। इवेंट पे हाँ आप लोगों के पीछे वाले घर पे नॉक पड़ा हुआ था। नहीं रफीक भाई सामने आए थे और फिर वापस चले गए। अच्छा रफीक भाई ग्लिचेस ऐसा ऐसा फिक्स हो रहे हैं।
भाई लवड़े पे आपको बैठा हूँ भाई, ब्लॉमस्टर से आते हो लवड़े पे आपको बैठा हूँ। मारो मारो भाई, अब मारो। हाँ नहीं वो वहाँ पे भी कैम्प कर लेगा। वो वहाँ पे भी कैम्प करके बैठ जाएगा। ये डब्बे किस चीज से पूरे होते अभी नासिर मैं भाई? रफीक भाई ये डब्बे ये इधर इवेंट पे होते हैं ना, जिस इवेंट पे उतरे हो यहाँ पे बॉक्स खोलने पड़ते हैं, उसके अंदर होते हैं। तो जैसे सात पूरे हो गए, बंदा जो है तो हवा में उड़ा, वो हवा में जहाज बना के घुमा बगैर दिक्कत। ये बगैरत के बच्चे ये फेंकने के बच्चे। मैं आ रहा हूँ जरा सा शॉप से। Marked a location. 3x मारा What वाफा is नासिर this भाई। man? Why? ما راح استراح نزاو شوف. देखो ये देखो फायर तो हो गया। नासिर एक गेम के एमओ है? एक गेम ना नॉक हो गया हूँ। नासिर भाई इधर नॉक थे Watch out. ना बोट थे। अब बंदे का साउंड आया। ना इस्लाम फोन चरता हूँ। गलत क्या हो रोजी सर। Marked a location. यहाँ अंदर पे कोई नजर नहीं आ रहा रफीक भाई, मैं ऊपर साइड से आया हूँ बिल्कुल। माशाल्लाह टीम सफाकत। नंबर 4 से पकड़े था नासिर भाई। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है भाई, बहुत अच्छी आ रही है जी भाई। बोलो बोलो। मैं कब से बोल रहा हूँ। ये क्या शो हो रहा है मैप में भाई? ये Marked a location. ये देखो और हाल से ये देखो मारो। मार रंडी का बच्चा है, दिमाग खराब कर रहा है। किधर था? किधर है चाचा? बड़ा बड़ा ही भाई पहुंचा हुआ कैंप करता है। ऊपर से आया था भाई। Thank you. अच्छा आसमान सोच रहा था। हमने जोन में जाना है। पैसा है माफिया। चलो इस चीज पे इंतजार चलो। हाँ जी रफीक भाई। आई गाट 2 रुपए।
वो बंदा आ रहा है। यहाँ पे इसके पीछे मेरी गाड़ी खड़ी हुई है। बंदा 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 बढ़िया कर। ड्रॉप पे आ रहे हैं, ड्रॉप पे। आने दो ड्रॉप पे, इसको बढ़िया कर। ये पुच पुच किसे लगा रखा है, मार तो करो। दाऊ वाला दलान दे। भाई साहब गाड़ी रोक के बैठा है पीछे। लेट के बैठे मालूम नहीं भाई ना मेरे सिरा मेरे सामने ये आ रहा है। ये आ रहा है। फायर माफिया। वेरी गुड माफिया। इधर माफिया नीचे 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 ना से माफिया। हाँ हाँ, दूर से कोई स्नैपिंग कर रहा है, दूर से कोई स्नैपिंग कर रहा है। Thank you. डीपी नहीं है किसी के पास। नहीं रफीक भाई, डीपी नहीं है, हेड ही तोड़ दिया उसका। नजदीक वाला जो नोक हो गया ना सर भाई, उसका क्या बना? वो फिनिश किया नंबर 4 में। मेरा होल नहीं है इधर से। कौन है? ये खड़ा है भाई। Watch out. मारो, मेरे पे शॉट्स लेगा वो, मारो। आप लोग तो आगे जाओ भाई, वो मुझे देख रहा है। हाँ हेलमेट गया उसका। नहीं रफीक भाई, ओ ये गया, ये कुत्ता गया। नाइस। एक रंडी का बच्चा इधर बैठा है, ये बेगैरत देखो। ये नीचे है, इधर ही बैठे है। माफिया फायर। उधर से भी कोई ऑन चला रहा है यार। एक तो ये AWM वाला ना, उनको तो मार तो माफिया नहीं वाले, रहा है। उनको तो माफिया वाले लौड़े पे बिठाओ, मजा आएगा। कतई जहर गेम करता है वो। इसको मैंने इनके स्क्वाड कुत्ते के की तरह सामने मारा, उसको कुत्ते की तरह, जैसे कुत्ता नहीं हाँ। होते, कसम खुदा की, ऐसे खुदा की कसम कोई कुत्ता नहीं मारता। एक केडी है इसका, और इसका है भी एक केडी कुसरे का। फुल भाई, फुल वो जो है ना शुगल में बैठा हुआ था कसम वहाँ पे। खुदा की, वो पहाड़ी वाली नहीं थी, वो पिक कर रहे थे वन उसको। सेकेंड ऐसे मारा जैसे एफएम सुखानी भाई, वो उसके दरख्तों दो के पीछे बंदों मार के रहा है। सामने, एफएम सुखानी उनका चेक करो। हाँ उसके ये दो बंदों के सामने। हाँ ये देखो ये देखो ये देखो। वन सेकेंड, एक काम करते नासिर भाई, मुझे गली बहुत जोर से आई है, इनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते, हाँ फिर लेकर आओ लोबी। किसको? एफएम स्वानी को? हाँ एफएम एफएम स्वानी को। स्वानी को हाँ ये लो, अगर एक्सेप्ट किया तो चाहिए, वरना बस मैं एक्सेप्ट लेकर आओ। सेंड कर दिया। चलो आ जाओ बाहर आ जाओ। You have still chance to return to the match. Leave anyway. That's Angere.
हम जिंदा काम है। वो तुम लोग की तरफ नहीं था, है। उसको इतना मैंने मारा, मैं बोलता हूँ वो रिवाइव होने के बाद मुझे इतनी गालियां दे रहा होगा, हर 2 सेकंड के बाद उसका वो पिछवाड़ा बार फाड़ बार कर। एक ही बात बोल रहा होगा, ये सब मिलके हमको क्यों मार रहे हैं। मैंने वो लगाया, वो A14 पता नहीं क्या है, उसमें ऑटो लगाया और ऑटो उसका वाला रिकॉल ना, भी अच्छा हाँ है। मैं समझ गया था, मैं समझ गया था और आप उसका उसको ऑटो पे माशाल्लाह चला रिकॉल भी रहे हैं। बहुत अच्छा है। जीरो तो वो जैसे ही रिकॉल का सबने है। हाइट उसका लगता था तारीफ ना किया है। बिल्कुल बिल्कुल वो चला, वो बहुत जबरदस्त है, डैमेज भी बहुत देता है। कभी कभी चलता है ना सिर भाई, कभी कभी वो नहीं लगता, मसला है उनका ये। नहीं नहीं, मेरा तो चलता है, मेरा तो रिकॉल सही है उसका। अभी हमारी वर्सेस वाला जो रफीक भाई लेट के डीपी चला रहा था, उसको मैंने लेट के एटीएम से मारा है, उसकी हेड ही हेड पे दे रहा था। हमजा तो आ गया, ऐड करना है तो कर लेते ये लोग। हाँ हमजा भाई आ गए, हमजा भाई को ऐड करते हैं ना। वो रिक्वेस्ट मुझे कर बोल के गए थे कि यार मेरा नेट का कुछ मसला हो रहा है, जल्दी कर चले। जैसे ही मेरा नेट सही होता है मैं वापस आऊँगा। मैंने बोला ओका। लेकर आओ। ओ रुको रुको नासिर भाई, रुको रुको, तो मैचिंग रुको। मैं नासिर भाई को बोल के गया कि नासिर भाई आ रहा हूँ रीस्टार्ट करके गेम। मैं पूरा पीसी रीस्टार्ट मारा, वो भी 2 दफ़ा। और फिर भी 2 दफ़ा पीसी रीस्टार्ट करने के बाद जो है ना, काफ़ी हद तक बग्स ख़त्म हुए हैं गेम के। काफ़ी बग्स ख़त्म हुए। लगा कि मैं फिर भी उसको दोबारा रीइंस्टॉल करूँगा, पूरा ड्राइव खाली करके। नहीं आ रहा हमजा भाई। सीजन स्टार्ट हो गया नहीं? हाँ स्टार्ट करें स्टार्ट करें। वर्दा पे मर का। It is showtime. ओ मैंने एंड में इसी वैशी रैप्टर को तो मारा है, मेरे ख्याल से, मेरा जहाँ तक ख्याल है, मुझे याद है। नहीं नहीं नहीं, वो वैशी रैप्टर नहीं था, वो कोई और था। भाई थोड़ा बड़ा इवेंट तो बनाओ, लवड़े बनाए है भाई। जैसे 5 बंदे ने टट्टी किया हो, ऐसा तो इन्होंने इवेंट बनाया है भाई, ये किया है। थोड़ा बड़ा तो बनाओ भाई। ये बहुत छोटा है यार, इसमें अगर कवर लो ना तो कवर लेने भी कैसे पड़ते हैं, वो लेट के। काफी भाई इससे छोटा इवेंट था फेरो वाला 4x4 का। नासिर हो, जो मेरा और आपका जगह ऊपर बैठे थे सेकंड फ्लोर पे, वो तो बड़ा आला जगह था। जगह तो सही था ना, लेकिन चाहिए। मेरा भी जगह बना है, मैं भी उधर बैठूंगा। ये देखिए मैं गेट के पास था। ये भाग रहे, पकड़ो इसको। गन नहीं है। I need a weapon. भाई एक गन है, एक गन है नासिर। बस एक यार गन नहीं है, एक गन ही नहीं। पता नहीं हमारे एनिमीज के पास 4 गने हैं। नहीं ये गन नहीं है, लवड़े लोगों।
मैं सेफ साइड जा रहा हूँ रफीक भाई। ग्रोनस नहीं जाओ मिली है भाई, मुझे वहाँ पे। ग्रोनस। ये भाई हमारा देखो डीप ये लोग क्लोज में चला रहे हैं, नॉक कर रहे हैं हम लोग से जो है वो बैरल ब्रोजा वो भी नहीं चलती। Help! यार टू इवेंट है ये। अच्छा चाचा की दोस्त भी आई हुई। हाँ एल Please चिकोरो recall एल me. चिकोरो है वे। अबे भाई आज के दौर में रिकॉल के लिए यार सबर करो। हो जा रहा सबर करो। ये तो हम लोग के साथ उतरा था फिर पर रिकॉल भी क्यों मांग रहे हैं? माड़ा बस हाँ करो ना। इन ऐसे को भाई। रिकॉल पे नहीं जाते फिर, हाँ दूसरों को गेम अच्छा खराब ना किया करो भाई। और प्लस पीछे से कम करते हैं यार। हेल्प हेल्प हेल्प। मैं 5 दिन से मैं हेलमेट का स्किन भूल जाता हूँ कि चेंज करना है। चलो मैं जाती हूँ इसको रिकॉल करने। माफिया अभी उधर अंडे ना दो। हाँ क्या करूं रफीक भाई ये लैंडिंग शेरोन ग्लिच में एक्टिवेट क्या किधर करूं है? लैंडिंग ग्लिच का। ये शेरोन एक्टिवेट नसर भाई ये है क्या? ये मैप ऑन करूँ ऊपर देखो ऑन लिखा होगा पता नहीं क्या है। ऑफ है इसको ऑन करो फिर मैप में दिखाएगा। मैप ओपन करो ऊपर देखो ग्रीन होगा निशान उसके बाद ऑन ऑफ होगा। नहीं नहीं 1 सेकंड, ये शेरोन का इधर बंदा है ये देखो। ठीक है ठीक है। I'm recalling a teammate. आफरीन। Thanks. ये बंदा है नासिर। Watch out. ओके ओके मैं वो कुछ जान जवाब न की قبل ما اخليه ريكول قواله فوق مار كدر اهو लान दे दे नीचे नीचे कैंपिंग कर रहे भाई। ده سريلانكا ده ده غطي الفرد المرأة ده رينكوش फजूल में लौड़े लगे थे। फायदा बे इतनी तेजी से दौड़ते हुए भी वहां से यहाँ तक आया है मेरा बंदा। I got supplies. creates इधर फाइट चल रहा है ये नासिर भाई इधर जो मैंने वो किया। चलो मैं गाड़ी लेके आया किधर मैप में देखो। गाड़ी जिस पे चलो चलो Bize geri çekilmek yakışmaz. Saldırın! ये ऊपर लौड़े पे हम चढ़े थे नासिर भाई, ऊपर चले गए थे उधर। ना किसी को आप मार सकते हो ना गन होता है। अच्छा ये शेरून है, शेरून इधर है नासिर। हम चढ़े थे। तो इतना दूर क्यों रोका उस्ताद 1 सेकंड, शेरून इधर है। ये मेरा ना मारो। Watch ये out. रहा रफीक भाई ये रहा बॉट। बोट है कि Watch रियल है out. रियल है रियल है चलो निकलो 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 आराम से नासिर भाई, बड़े खरामी है। मैं ओपन में स्प्रे दिया नंबर 4 इधर आ जाओ
3 नंबर वहाँ था। साथ में स्नाइपर, वो भी स्नाइपर भी नहीं है। मेरा हेल्थ ही था। किट है तो दे दो। Thank you. किट 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 किट। नासिर भाई को हेल्थ किट है? नासिर भाई ये लो नहीं किट पकड़ो, नहीं किट पकड़ो, मैं बैंडेजेस लगाता हूँ। I got supplies. मेरे ऊपर बंदे, बैंडेज बैंडेज छोड़ो भाई, ये ऊपर मैं फिर भाई सैंडविच हूँ, मैं इनको जरा पीछे से लेता हूँ। हाँ हेल्थ रुको। नहीं है। मैं फंस गया हूँ, अब पीछे से कैसे लेंगे भाई। अच्छा वो गाड़ी उठा रहा है। हाँ उनका गाड़ी है ना। मेरे ऊपर बंदा है भाई, वो चेक करो। वो रिकॉल पे जाएगा नासिर भाई। हाँ गया गया, मैं उसके पीछे हूँ। फिर कुछ रहा है स्ट्रीम स्नाइप करके, पहले नहीं आते। माफिया ऊपर से चढ़ो, लगा लो उसमें। माफिया गए किधर हो? आगे फाइट ले रहे थे, फिर भी हम तो उधर से फाइट ले रहे हैं ना। लौड़े पे बैठो मड़ा माफिया, फजूल गेम खेलते हो, दिमाग खराब कर रहे हो। आपके साथ गेम खेलना भी बेकार है मड़ा। इसे फजूल दिमाग खराब कर रहे हो कसम खुदा की।